व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं जस्ट वेलकम बैक टू जेंशन इम्पैक्ट लाइव स्ट्रीम। आज रात को लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं क्योंकि दिन में मैं जब स्टोरी क्वेस्ट करता हूं तब लोगों का इंटरेस्ट कम होता है और एकदम से अच्छे सारे व्यूअर्स एकदम से बहुत डाउन हो जाते हैं। तो मैं रात को स्टोरी क्वेस्ट करने वाला हूं आज, और हो सके एक दिन रात को और करूंगा जिसमें मेरे सारे स्टोरी क्वेस्ट खत्म हो जाएंगे। तो लोगों को स्टोरी क्वेस्ट में इंटरेस्ट कम आ रहा है और इस लाइव स्ट्रीम में सिर्फ और सिर्फ स्टोरी क्वेस्ट करेंगे और कुछ नहीं। तो उससे पहले एक वीडियो देख लेते हैं हम, जो कि हमारा रिचुअल बन चुका है। कितना कामिंग म्यूजिक एंड वीडियो है यार। वो ये वीडियो एक साल पहले आया था गाइस। जेंशन, यस जेंशन खेलेंगे आज, स्टोरी क्वेस्ट कंप्लीट करेंगे। दिन में लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता स्टोरी क्वेस्ट में। मैं दिन में बेमतलब की सारी की सारी जनता को अपना भेज देता हूँ, फ़ायदा नहीं है ना। तो दिन में स्टोरी क्वेस्ट को नहीं करेंगे, रात को करेंगे स्टोरी क्वेस्ट। और एक और अनाउंसमेंट गाइस, कल कल की जो स्ट्रीम होगी उसके अंदर मैंने कहा था कि आपको मैं चाइनीज़ की और इंग्लिश की दोनों की आपको लाइव रिएक्शन देने वाला हूँ। बट कल की स्ट्रीम लाइव 2 से 12 घंटे 10 घंटे की स्ट्रीम करने वाला हूँ गाइस, विदाउट स्टॉपिंग। 10 घंटे की स्ट्रीम करने वाला हूँ कल की स्ट्रीम। दो लाइव वीडियोस देखनी है हमें, 2 लाइव स्ट्रीम देखनी है, चाइनीज एंड इंग्लिश की। शाहिद, रहमत पाल, शाहिद अली, विलेज सैजन, देवांग भाई, लाइट एनचार्टेड, निहित भाई, उसके अलावा सेबर, मोहम्मद, दिव्यांशु। कैसे हो गाइस आप सब? प्लीज स्टार्ट, आई एम वेटिंग। थोड़ा सा टाइम लगता है यार शुरू शुरू में, म्यूजिक अच्छा नहीं लग रहा था क्या? दिन हो या रात, जंक्शन होगा साथ, एमजे न्यू मरा। इज समथिंग स्पेशल टुडे? नहीं। मतलब यार, स्टोरी क्वेस्ट में लोगों का इंटरेस्ट कम होता है, इसलिए मैं रात को स्टोरी क्वेस्ट करने वाला हूँ। क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं लेते लोग इंटरेस्ट, और सारे चले जाते हैं। मतलब मैं बहुत पूछता भी हूँ लोगों से कि इंटरेस्ट है कि नहीं है, फिर भी लोग चले जाते हैं। बाय द वे, जिसने मिस कर दिया ना, मैं जाने से पहले मैंने लिटरली एक आधा घंटा स्पायरल भी पार कर दिया है सारा, और जिसने मिस कर दिया वो कर दिया है। फ्लोर कल करूँगा, बाकी अब मैं लिटरली सारा पार कर दिया मैंने। मैं यहाँ पे था, फ्लोर 4 पे था शायद मुझे, फ्लोर 4 पे। फ्लोर 4, 5, 6, 7 सब कंप्लीट कर दिया मैंने। देखे कितने प्रीमोजेम्स हो गए हैं। ओ भाई 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 भाई, अरे भाई क्या बात है। 30 पुल्स के लिए कितने चाहिए होते हैं? 4800 ना भाई, 40 तो पक्के हैं अपने पास। 73 यार, जस्ट पीटी हिट होने वाली है। जस्ट पीटी हिट होएगी, अगर पहले मिल गया तो बात अलग है, बट जस्ट पीटी हिट होएगी। आर यू फ्रॉम फार फ्रॉम पीटी, डू यू नीड 90 पुल्स? आप मेरे से पूछ रहे हो कि शायद से पूछ रहे हो? मैं 33 पीटी पे हूँ, और प्रीमोजेम्स देख ही रहे हो आप। देन यूल से द रेस्ट ऑफ जेम्स। अच्छा, आप शाहिद से बात कर रहे हो? मेरे तो शाव आते ही 9K होगा जेम्स, क्या बात है। अभी क्यों की स्कूल है? अभी स्कूल है? आपको गाने के लिए जेम्स चाहिए? आए हाय, मेरे पास तो हो गए हैं काफ़ी अच्छे खासे, और अभी तो बहुत पेंडिंग पड़ी है मेरी फार्मिंग। शाह और गान्यू, इस वाले अकाउंट में गान्यू 1 तारीख को गान्यू के लिए विश करने वाले हैं गाइस, इस वाले अकाउंट में। और दूसरे अकाउंट में शाओ।
तो दूसरे अकाउंट में तो सारे क्वेस्ट हो ही चुके हैं, इसके अंदर करना है। तो इस वाले में बस मैं शायद एक इससे फाइट कर लूँ, मैं शायद क्या करना ही पड़ेगा। इसके अलावा सिर्फ स्टोरी क्वेस्ट करेंगे गाइस, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी क्वेस्ट। थैंक यू सो मच 10 लाइक्स के लिए ऑलरेडी। लाइक गोल को कोई 30 कर दो और मेरा सब गोल कंप्लीट कर दो यार। सब गोल ऑलरेडी अब तो कंप्लीट कर दो यार, बिल्कुल क्लोज है, बिल्कुल क्लोज है। 2 सब्सक्राइबर, सिर्फ 2 सब्सक्राइबर, ताकि मैं सब गोल अपडेट कर सकूं। वेट, मैंने क्या लिया? शील्ड मी फ्रॉम द वर्ल्ड, हैव ए सिंगल कैरेक्टर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ शील्ड एट वंस। अच्छा, शो अस वुन शूट मतलब हम देखा था, आपने देखा था, आपने भी देखा था। मुझे भी डीलू के लगानी चाहिए नाइस। शो अस वन शूट मतलब, वन शूट का मतलब। थैंक यू सेवर लाइक गोल अपडेट करने के लिए। किल बॉस इन वन शॉट नहीं होगा, इतनी औकात नहीं है मेरी, करेक्टर की भी और मेरी भी। ब्रो फ्री टू प्ले प्लेयर हूँ मैं यार, मतलब कोशिश ऐसे कर सकता हूँ कि भाई बारबरा को मैंने दे दिया या फिर किसी भी कैटलिस्ट यूज़र को दे दिया थ्रिलिंग टेल्स ऑफ ड्रैगन, और मैंने बफ कर दिया फूड से बहुत ज़्यादा। इस तरह से कुछ बफ तो दे के वन शॉट कर सकता हूँ करना चाहूँ तो, बट करने नहीं वाला मैं ये सब। अभी मैं वैसे भी ओबियसली स्टोरी क्वेस्ट के लिए स्ट्रीम कर रहा हूँ स्पेशल, तो फ्री टू प्ले नहीं है, मतलब समझ जाओ यार। क्या ही फर्क पड़ता है यार, 3000 प्रीमो जैम से एक महीने में नहीं पड़ता है। मेरा बोलने का मतलब था मैं कैजुअल प्लेयर हूँ, ओके ठीक है। अक्षित भाई कैसे वेलकम। सुनील कैसे वेलकम। पापा का फोन से अभी सब्सक्राइब कर, थैंक यू ब्रो। सब्सक्राइबर गो मेरे को सब गोल अपडेट करने का मौका दो यार, सब गोल अपडेट करने का मौका। चलो क्ली का मिशन करते हैं, देखते हैं क्ली बेंटी और मोना का 3 का हो जाएगा क्या सब क्वेस्ट स्टोरी क्वेस्ट। रात की स्ट्रीम में सिर्फ स्टोरी क्वेस्ट, कल करेंगे बाकी सब कुछ। फिर से मैं आप लोगों को न्यूज़ दे देता हूँ, कल की स्ट्रीम 2 से 12 तक करूंगा, रात को 12 बजे तक। 2 बजे चालू करूंगा दिन में और 12 बजे तक, मतलब एंड का टाइम कुछ फिक्स नहीं है। जैसे नॉर्मली दिन में फिक्स होता है ना 9 बजे तक करता हूँ मैं, तो रात का लाइव स्ट्रीम चेक करने के बाद भी थोड़ी देर खेल के फिर बंद करेंगे। आपका सिंचा वाले वीडियो ने देखा आपने, मेरे को डीएम किया था क्या? देखना बाकी है ब्रो। ब्रो अभी तो गया था, डिनर करके ही आया हूँ, थोड़ी देर फैमिली के साथ बैठ के आया हूँ बस। थोड़ी देर 9 बजे तो गया था, 2 घंटे का ब्रेक था बीच में बस। 6:30 से 8 तक नहीं देखोगे आप, रात को देखोगे क्या लाइव स्ट्रीम? वैसे 6:30 बजे तक तो खत्म हो जाएगी, 5:30 शुरू होने वाली है। Who is the strongest fighter in Monster? The strongest fighter? I don't pay much attention to that sort of thing. Huh. Paimon thought bartenders had some kind of special information sources. साढ़े 6 से 8 नहीं देखोगे, वही बोल रहा हूँ, बट किस लिए, क्या रीजन? Exactly. That's what Paimon was getting at. I have no involvement in any intelligence gathering operation. But if you made me pick someone,
It would be the Dark Knight hero. I've heard some stories about him. Apparently, he once rescued a city dweller from the Abyss Order. There it is! The barman's top secret intelligence! Speaking of the Abyss Order, their minions are really stirring up trouble all over the place, aren't they? What would you like? बाढ़ भाई Hey, सही है amigo. Do you want to hear my latest composition? I put my whole heart into it, and also my soul. How about it, amigo? amigo Huh? The most macho in Mondstadt. She's a little girlie who wears red. little girl who wears red, a girl dressed in That's red. right. I found this out one day about half a month ago when I went up to the Storm Bear Mountains looking for inspiration for my new song. Guess what happened? What happened? I witnessed the most powerful destructive force I have ever seen in my life. I'm telling you, it completely changed the whole landscape in that part of the mountains. Holy moly! I was hiding behind a bush and I saw this little girlie in red clothing running into the distance, leaving a trail of destruction in her wake. But I don't know if anyone will believe me. Now that you mention it, the idea of a tiny little girl wielding that much destructive power is a little far-fetched. You want to know what I think? I think she has a treasure nobody else knows about. Maybe even the most powerful treasure in all of Mondstadt. Did you say treasure? Did Paimon imagine that, or did you hear it too? It's just a guess. I mean, ब्रोकली वाला की no. मिशन बहुत क्यूट होने It's a वाला है bard's बहुत razor मजे sharp आने वाला है intuition. एस्ट्रोफिनिक्स कैसे हो आज रात को स्ट्रीम करता हूँ बट जेंशन की इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दिन में कोई स्टोरी क्वेस्ट देखने को इंटरेस्ट नहीं देता है और रात को वैसे भी वॉचिंग कम आती है तो मैं स्टोरी क्वेस्ट रात को कर लेता हूँ काश जेंशन लैंग्वेज हिंदी में भी अवेलेबल होता बहुत लेजेंडरी लगता बट मैं हिंदी में नहीं करता इसलिए ये हिंदी डबिंग मुझे पता था ना इतनी बेकार करते ना ये हिंदी डबिंग इतनी बेकार करते हैं मूवीज़ की इतनी बेकार होती है क्या ही बताऊँ अगर कोई ढंग का स्टूडियो बट कोई है नहीं ढंग का स्टूडियो जो हिंदी की डबिंग कर सके अच्छे से रेजर शार्प इंट्यूशन रेजर भी आराम ले लिया इसने क्लिक की तारीफ करते हुए Thank you, amigo. I am so happy to meet a true amigo. Who would have thought? So, this girl, what's her name? I do not know her name. I do not see her often in Mondstadt. Hey, I'm telling the truth. You gotta believe me. Doesn't sound like much to go on. But thanks for your intel. पता है साउथ वाले आवाज़ से देते हैं फिर से हाँ मतलब डबिंग बहुत बेकार है इंग्लिश मूवीज़ की डबिंग मूवीज़ देखी है इतनी बेकार होती है डबिंग की पहले बहुत अच्छी हुआ करती थी पुरानी मूवीज़ की Are you here to try Mondstadt's famous wine too? Dandelion wine The strongest fighter of them all? That would be Gene, obviously. Why? Grandmaster Jean is so strong. She can take out a ruin guard with just a few slashes of her sword. And she could wipe out the 3 hilly Trill tribes at Dada Upa Gorge all by herself. Otherwise, we wouldn't have such a carefree existence. With nothing to do. Nothing to do. It's true that Jin makes people feel they're in safe hands. Meanwhile, this guy is drunk as a skunk. डायलॉग ऑप्शन बहुत बढ़िया है इसके इंग्लिश में तो खासकर ब्लिजर्ड 5 स्टार आर्टिफैक्ट में डिफेंस कप मिला ब्लिजर्ड में डिफेंस कप Hey, I'm doing some adventurers training. Alcohol आप tolerance मेरे को ये training, बोलते हैं ना to कि be precise. हाइड्रो मिला तो Wanna थोड़ा join me? अफसोस होता है डिफेंस तो कॉमन बात है ब्रो रबर खान थैंक यू कैसे हो थैंक यू इसलिए क्योंकि आप मेरी तारीफ कर रहे थे आपने लिखा था ना कि एमजे अपनी वीडियो के लिए बहुत मेहनत करता है इसके लिए थैंक यू ब्रो गॉड असिस्टेंट वेलकम कैसे हो You want to know who I think the toughest fighter is? In my opinion, that would be the finest adventurer of them all, Stanley.
Guildmaster Cyrus is up there with the toughest 11 too, PM है, but only AM नहीं Stanley है can take अभी. on the bloodthirsty beasts of the Mare Javari. Bloodthirsty beasts of the Marjavari? Sounds terrifying. Do you think you'd be scared if you were faced with one of those? मेरे तो चाइल्ड फार्मिंग कंप्लीट ही नहीं हुई अभी तक. कब से कर रहे हो ब्रो? किसी भी कैरेक्टर की फार्मिंग 100% तो कभी भी कंप्लीट नहीं होती है. मेरे को फिर से कचिंग को अपडेट करने का मन है. कब से कर रहा हूँ मैं भी. Yeah! Bam! Wham! Pow! Patton was right about one thing. Everyone has an opinion. If everyone's got their own opinion and can't be persuaded, how are we ever gonna find out who Mondstadt's strongest fighter is? Eureka! Paimon's got it! Let's go see what Jean says. Bet the Knights have got an official ranking table for this kind of thing. What makes you sure? Or do you think I'll be there? I'll be on there? Guess it depends if they counted all your shenanigans or not. Don't worry though, Paimon has full confidence in your abilities. मेरे पास एक ही शेडो ऑफ द वॉरियर है. शेडो ऑफ द वॉरियर क्या होता है? अटैक टाइम पीस ही नहीं मिल रहा. अटैक टाइम पीस, हाँ यार. टाइम पीस में मेन स्टैट कितने सारे होते हैं ना. क्राउन में तो और ज़्यादा होते हैं. दोनों मोबाइल पे सब्सक्राइब कर दिया, सब कंप्लीट. थैंक यू सो मच ब्रो. थैंक यू सो मच. अरे भाई सब्सक्राइबर गोल कंप्लीट हो गया गाइस. क्या बात है. थैंक यू सो मच सुनील भाई. कोई सब्सक्राइबर गोल अपडेट करेगा? मैं भी करता हूँ वैसे स्क्रीन पे. परफेक्ट. कांग्रेस. थैंक यू निखिल भाई. शाव का टैलेंट मटेरियल चाइल्ड ड्रॉप करता है. हाँ. थैंक यू शाहिद. थैंक यू एवरीवन फॉर द 700 सब्सक्राइबर. 70% हो गए हमारा. वॉच आवर्स 5000 के आसपास हो गए हैं. आई थिंक सो हो गए होंगे. थैंक यू ब्रो. थैंक यू मनीष. थैंक यू गॉडर शिक्षण. थैंक यू सो मच गाइस 19 लाइक्स के लिए भी. क्ली वाला मिशन, क्ली की एंट्रेंस होने वाली है. वीडियो में भी क्ली आई थी शुरुआत में. जो वीडियो देखी थी ना मैंने, उसमें भी क्ली का सीन आया था. वो भी बहुत अच्छा था. आपका ऊपर वाला रेड चैट कौन सा रह गया है? ओह ब्रो, मुझे एक आर्टिफैक्ट पीएचडी बंदा चाहिए जिसको मैं अपने सारे आर्टिफैक्ट्स के फोटोज भेज के मुझे बोले कि ये अच्छा है, गोल्ड लाइक है और ख़राब है. अच्छा, काश यार चैटिंग में फ़ोटो भेज सकते हैं, है ना. शोकेस में पूछते रहो आप लोगों से. शोकेस में अपने सर्वर में 20 लाइक्स डन. पॉइंट दूँ? 30 लाइक गोल है ब्रो. लाइक गोल 30 है. पाइमोन वेलकम. टीना वेलकम. एंड You should hello. really bring the Knights of Favonius with you next time. स्लो म्यूजिक. मस्त सीन था, धीरे धीरे चल रहा था. Oh, Master Jean! Sorry to bother you. We're collecting intel on the strongest fighter in Mondstadt. Do you have, one of those official Knights of Favonius verified ranking table thingies? Strongest fighter in Mondstadt? Huh.
I am sorry, but I cannot help. I do not have any relevant documentation on that topic. Oh, well that sucks. I was That hoping sucks. she would at least make the top 5. Well, although I do not have the data to make such an assessment, I will say that my faith in our honorary knight's abilities has never wavered. Which reminds me, recently one of the Abyss Order's mages has been active near the city, although he is keeping a low profile. If you are staying around Mondstadt, please be on the lookout for danger. Given your, well, high-ranking fighting strength, I trust you will be able to help keep the area safe. Awesome! After she beats the Abyss Order, she'll climb up that ranking table faster than she climbs up all those cliffs. Paimon, there is no ranking table. Do you think I'll get to the first place? मेरे को ये वाला करना पड़ेगा. Super greedy? कौन पाइमोन है? मैं ये वाली पाइमोन है. सॉरी सीरियसली मैं आपको नहीं बोल रहा था. इस वाली पाइमोन की बात कर रहा हूँ मैं. भाई क्या कोइंसिडेंस था. ओ भाई क्या कोइंसिडेंस था. मेरे घर पे 6 मोबाइल है और मैं सबके तुमको सब्सक्राइब किया हूँ और अपने दोस्तों को भी बताऊंगा ब्रो. थैंक यू सो मच ब्रो. थैंक यू गाइस. आप व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल सकते हैं. सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका है वर्ड फैलाने का. चेक आउट दिस चैनल, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, इट विल बी अ ग्रेट हेल्प. मैंने काफ़ी फ्रेंड्स को बोला है इसे करने से, इसलिए थोड़े थोड़े सब्सक्राइबर बैकग्राउंड में चढ़ इंक्रीज हो रहे हैं अपने आप. मेरे घर पे ओके हो गया. क्या कोइंसिडेंस है यार. मैंने बोला पाइमोन है. मैं इस पाइमोन की बात कर रहा था क्योंकि सीरियसली ये बोल रही थी अभी. थैंक यू सर्वर खान ब्रो. मेरे को ये भी बात बोली. जिसका चेहरा देखो कितनी खुश होती है कई बार ये. All Paimons are greedy, yes. Well, either way, smashing the Abyss Order to bits is the right thing to do. I like your enthusiasm. It is infectious. But be careful out there. Perfect. Leave the Knights of Favonius office. Okay, रुक जाओ. धीरे धीरे जाएगा डीलो. जीन के साथ जीन का पीछा नहीं छोड़ना चाहता. धड़ाक. ईयर देखो, लग रहा है ना एल्फ वाले ईयर है. एल्फ ईयर ध्यान से देखो ये. ईयर्स देखो इसके. अरे I'm fine. I'm not hurt. Sorry for bumping into you. वेट, अलग अलग क्यों हो रहा है. ऑडियो पहले थी. क्यूटली सो क्यूट. ईयर्स देखो यार, मैंने कभी नोटिस नहीं है. मुझे लगा हमेशा से बालों का, बट अजीब सी लगती है ईयर्स को देख के. मेरे को ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा लंबे ईयर्स और नीचे की तरफ है इसके. और उसके क्या कहते हैं ईयर्स, शुक्र उसके. इन दोनों के ईयर्स अजीब से हैं, बहुत ज़्यादा अजीब से हैं. Hey, look! Explosion inside city wall, grounded be thy woe. Explosion can hurt people, Jean can be dreadful. Monstered be bomb, clean be doomed. There's some writing on here. Explosion inside city wall. Grounded be thy woe. Explosions can hurt people. Jean can be dreadful. Mondstadt be bombed. Klee be doomed. Yikes. Of course she is an elf. Mr. Kaya wrote these down for me. काया ने वो लिखा. अच्छा They're सही लिखा गाया ने भी. सर्वाइवल रूल. survival rules. Yeah. Rules that I must absolutely never break under any circumstances. Otherwise, something terrible would happen. वेट रियली पता नहीं ये एल्फ है कि नहीं है, बट ईयर्स तो एल्फ जैसे ही हैं. सुक्रोस के भी ईयर्स ऐसे ही हैं एल्फ जैसे. ये इसके बॉम्ब कौन बनाता है? इसके जो बॉम्ब्स हैं सुक्रोस ने बनाए ना वो बॉम्ब्स. याद हो गया आपको तो. बहुत बार सुना है यार, बहुत बार. बार बार बोलती रहती है बैकग्राउंड में, चुप ही नहीं होती थी ये.
myself. My name is Klee. हेलो क्ली। I've heard all about you guys. You're the honorary knight who helps Mondstadt. Wow! More recognition, yay! Paimon is so happy right now. I heard it from Amber. But wait, no. There's no time for this right now. एम्बर ने तो इसको I'm पहचाना ही dealing नहीं with a big emergency. I grabbed my map and ran as fast as I could all the way here. था। एम्बर ने जब रेजर के साथ मिशन हुआ था तब एम्बर ने वो कैसे गर्ल इन रेड तो उसने उसका नाम क्यों नहीं लिया आज टाइम। बट गेम में कभी एल्स का मेंशन नहीं हुआ। हाँ ये बात भी है, बट मैं ये नहीं कह रहा कि एल्व्स है, बट इनके कान मैच करते जो कि एल्व्स जैसे हैं, वैसे ये बात बोल रहा हूँ मैं। इसके और सुक्रोस के अलग टाइप के ईयर्स हैं जो कि एल्व्स जैसे ईयर्स हैं। एल्व्स का कोई मेंशन नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं, ये नहीं पता कि हमें सही में एल्व्स है कि नहीं। ये ईयर्स ही है ना ये जो बाहर निकले हुए हैं। The treasure I buried in the Whispering Woods. It's gone. Did you say buried treasure? I think she needs our help. A girl dressed in red, huh? And she has treasure. Seriously? Clay gets Six Finger Jose's vote for strongest fighter in Mondstadt? What is wrong with people? Lost treasure is a big deal. Let us help you find it. Yay! Thanks, you guys. Here's where the map says the treasure should be. I put a circle around it. I also put a wooden sign in the ground at the place where I buried it, to make it easier to find. Paimon is starting to understand how this treasure went missing so easily. Come on, Miss Honorary Knight, let's go. ये वाली जिफ है जो ऐसे हिलती है ना, जिसकी जिफ है डिस्कॉर्ड में काफी लोग यूज करते थे। भाई रेजर के साथ कौन सी टीम बिल्ड करनी चाहिए? हो सके तो शिनियन को यूज करो। बताऊं क्यों? मैंने कभी यूज नहीं किया है, बट मैंने सुना है कि बहुत अच्छी है ये। डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ ओपोनेंट स्वीपिंग फेवर मस्ट हिट ट्रिगर। डिफेंसिव बिल्ड है। शील्ड लेवल 1 ऑप्शन 1 ग्रांट्स लेवल। मेरे को इतना याद आ रहा है कि ये ना बफ करती है रेजर को काफ़ी। कैसे करती है याद नहीं आ रहा, बट करती है। ये रहा। डील्स 15% इंक्रीज फिजिकल डैमेज। आप शील्ड यूज़ कर सकते हो इसकी। शील्ड लगा के आप इसका टैलेंट से उसकी फिजिकल डैमेज में 15% बफ दे सकते हो। प्लस पायरो हो जाएगी एक अच्छा सपोर्ट करेक्टर है, प्लस डिफेंसिव से शील्ड इंक्रीज होती है इसकी। ये वाले टैलेंट से ये रेजर को अच्छा बफ देती है। एक तरह का पाथ है अगर चाहो तो यूज़ करना। उसके अलावा ऑफ फील्ड जो फायदे करते हैं, फिशल भी अच्छी है वैसे तो, बट इलेक्ट्रो रेजोनेंस पसंद नहीं है मुझे। बैनेट अच्छा है बहुत रेजर के लिए। Your treasure's gone, but you seem oddly happy. ली कुछ डायलॉग्स मिसिंग थे, बट उसने अभी रेजर की बात करी। शिनियन नहीं है। अच्छा, व्हेन द स्ट्रीम हैपनिंग ऑन इंडिया टाइम? चाइना वाली तो होनी है 5:30 बजे। कोई 100% श्योर बता सकता है? मुझे एक्चुअली पता नहीं ये बात। 5:30 बजे और 9:30 बजे ही होने वाली है ना गाइस। मैंने एक्चुअली चेक नहीं किया, मैं लास्ट टाइम के हिसाब से बोल रहा हूँ। 5:30 9:30 कोई चेक करके बता सकता है मुझे? सीरियसली मैंने चेक नहीं किया इस बार। नॉट ओनली दैट, सी द कॉन्स्टलेशन।
Upon scoring a crit hit attack, increase attack speed of Shinyan, normal and charge attack. Okay. Physical damage has its crit rate 100% and will form a shield at a shield level 3. Bro, second C2 Shinyan बहुत जबरदस्त है. मुझे पता था ये काफी बफ करती है. Decrease opponent physical resistance by 15%. शिनियन बहुत अच्छी है यार उसके रेजर के लिए. रेजर और बेडू और शिंगलिंग तीनों के लिए. शिंगलिंग के साथ तो और भी अच्छी है. मेरे पास ये है नहीं, वरना मैं इसको शिंगलिंग के साथ बना लेता. रहमत पाल सिंह कैसे हो ब्रो? फिजिकल रेजिस्टेंस, फिजिकल डैमेज बफ, क्रिट रेट, क्रिट 100% क्रिट, काफी बढ़िया है रो. टॉक टू क्ली. We're here. This is the place. Look, this is where my huge treasure was buried. And where there's now a huge empty hole in the ground. आई हैव C5 शिनियन. क्या बात है. रेजर के साथ यूज करते होगे फिर तो आप. रेजर किसके साथ करते हो? वो देखो अब इस मैच इसका ही वो रखा है इसने. It's an abyss mage. Hey, maybe he's the one Jean was warning us about. What's that in his hand? My treasure! What? I see the little girl has brought her friends with her. Time for a change of plan. Hey, you! If you think you're so tough, get back here and fight! आफ्टर हिम. What's an abyss mage? I play in the forest all the time, but I've never seen one before. अबिश में नहीं पता So इसको. cute, soft, and fluffy. I want to pet it. It's all कहती है अबिश में क्यूट है, फ्लफी है, मुझे पेट कर. ओ भाई. अरे यार. Game's up! Now hand it over! Oh, you fools think I would give this up so easily after what I've been through to acquire it? Absorption test. Animal test 6308. Careful, Clee. Don't be drawn in by it. Even though there was in the same banner, I don't have razor. Oh. Your treasure's gone, but you seem oddly ये क्या था? happy. आपको पता है मेरे पास बैनेट नहीं है और मेरे पास सिक्रो C4 है. सेम बैनर पे थे और पांचों के पांचों सुक्रोस मुझे उसी बैनर से मिली है, जितना मुझे याद आ रहा है. शायद 5 मिली या 4 तो मिली है उसी बैनर से. We're here. This is the place. Look, this is where my huge वेट, treasure रिस्टार्ट was क्यों हो रहा है buried. मेरा ये? And where there's now a huge empty hole in the ground. रिस्टार्ट क्यों हो गया? मैंने क्या गलत कर दिया? It's... What's that in his hand? What? I see the little girl is brought. Hey, you! If you think you... What's an abyss और mage? सेबर के पास I play in the forest चोंग्यून all the नहीं है. time, but I've इफा never लिसा. seen one before. इटू मोना है He पर looks चोंग्यून so नहीं है. cute, soft, Time loop है. and fluffy. I want to pet it. Game's up! Now... Oh, you fools. If a beach may get one, अच्छा the quest will be over. Come at me! Animal test 6308. Careful, Clee. Don't be drawn in by it. Abyss mages are the bad guys. Oh, that's right. Grandmaster Jean says that stealing is wrong. Freeze! हाँ, don't let him get away. कैसे? टीम एसएस कैसे? उसका पीछा मत छोड़ो मैं इसका. हाँ, समझ गया. It's been 1 month and 2 weeks I am playing the game. एक आपने 6 हफ्ते से गेम नहीं खेला? क्या बात है?
kids? But if we could just get him to give it back. Where'd he go? The Abyss Mage. He just disappeared. What's going on? A gateway to a domain. The Abyss Mage must have snuck inside. स्मार्टी रोशन कैसे हो? वेलकम ब्रो। उसको क्या आपको पता है मेरे पास बैनेट नहीं है और सुक्रोस C6 है। ये भी सही है, बट सुक्रोस पहले वाले बैनर से मिली होगी ना आपको, या इसी बैनर में आपको 7 बार मिली और बैनेट नहीं मिला एक बार भी? ऐसे उसमें हुआ था मेरे साथ चाइल्ड बैनर पे। चाइल्ड वाले बैनर में मैंने मेन अकाउंट पे कितनी विशेष करी थी, 60 के आसपास करी थी, मुझे डायना नहीं मिली एक बार भी, चाइल्ड भी नहीं मिला वैसे। बट बैनेट और अल्बेडो वाले बैनर पे तो और भी गजब हो गया, 5 बार सुक्रोस, 1 अल्बेडो, बट बैनेट एक भी नहीं। थक गई। Clee, do you need a rest? Why don't you wait here while we get your treasure back for you? No! I'm coming with you. It's my treasure that Mr. Fluffball stole, and it's up to me to get it back. मिस्टर फ्लफ बॉल, वाओ। Don't worry, Clee is a big girl. बिग Come on, Miss Honorary Knight, let's go! सुक्रोस मुझे नोविस बैनर से मिली थी। अच्छा, La la la. ला ता 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 ला ला ला। गाइस 4-5 स्टार मिल गए मुझे, क्ली भी मिल गई। क्ली एंड डीलू के ऑन द सेम अकाउंट। आई पार्ट लेवल 30 MJ विद 70-80। ये बात भी सही है। सेंटा क्लॉज जैसे कपड़े पहन के रखती क्ली। सुक्रोस के ईयर्स दिखाऊं? है ना नीचे जैसे जैसे क्लीके हैं, ऐसी क्लीके हैं। आपने अभी नोटिस किया सुक्रोस एल्फ 2? एल्फ का भी वर्ड यूज़ नहीं किया है चैनल गेम के अंदर कभी, बट है दोनों के ईयर से एक जैसे। Coming to be. Nice. बोइंग 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 बोइंग। हाँ, मुझे नहीं वाइट करनी क्ली से, मेरे पास है क्ली। ऐसा तो है नहीं कि मुझे वन टाइम मौका मिल जाने वाला है। Retribution! Coming to be. Animal test 6308. Absorption test. Animal hypostasis and your life goes on. Witness my great undertaking. Retribution!
Chico is not help, she's dog. What the hell, bro? एनीमे में तो सब कुछ जायज है. I have Klee and Dilu कौन सी अकाउंट? Klee was the luckiest pool और 20 क्या बात. मेरा luckiest pool अल्बेडो है. दिलू के मिलने के बाद, दिलू तो पीटी से मिला था मुझे, बट दिलू के मिलने के बाद 4 भी चीज़ के अंदर मिल गया. क्ली अकेली ऐसी करेक्टर है जो मुझे 50-50 में मिली थी फीचर्ड होने के बाद भी. थर्टी लाइक्स डन, थैंक यू ब्रो. वेट, पॉज नहीं होता यहाँ पे. ला ला ला. हाइट कम है इसकी, नीचे से निकल गई. ये तो चीचे की भी हाइट कम है. दोस्त चेस्ट कम अंडर मोस्टेड रीजन. हाँ नहीं, एक बार वन टाइम होते हैं वो चेस्ट. अगर आपको इस मिशन में मिल गए तो मिल गए, नहीं मिले तो नहीं मिले. अपने इस मिशन में ले लिए तो ले लिया, नहीं मिले तो नहीं लिया. पैरेलल बीस में कौन सा फ्लोर पे हो? इस वाले अकाउंट में फ्लोर 8 शुरू करना है और मेन अकाउंट में फ्लोर 9, क्योंकि वो एक्चुअली रीसेट हो गया ना. रीसेट के बाद क्या नहीं मैंने. मेरे पास सिर्फ, मैं भी लाइक कॉल अपडेट करने वाला हूँ. मेरे पास सिर्फ 5 स्टार हैं. क्लीव एंड तीनों 50-50. क्या बात. एक भी फीचर फाइल वो नहीं है. मतलब आपके पास कॉन्स्टलेशन मिलने के सबसे कम चांस है. आप अवॉइड कर सकते हो कॉन्स्टलेशन कभी भी. लोगों के पास C1 मोना, चीची, ये उनका चिंग देखी है मैंने. डीलुक तो कम देखा है, पता नहीं क्यों. You followed me. I must say, I'm impressed. But this is as far as you will get. Oh yeah? 500 points What दे are you दिए gonna मैंने do? आपको. Oh, the human proclivity to gossip has provided us with everything we need. We learned that your little red friend had in her possession the most powerful treasure in all of Mondstadt. That treasure is now in my hands. There is nothing you can do. Now your precious treasure shall be your undoing. No, no, wait! Don't touch it! Oh, how you fret now your predicament is finally clear to you. Now, what have we here? A flame symbol. गया 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 खलास. पटाखा बज गया उसका. No! I broke the survival rules. Explosions can hurt people. Gene can be dreadful.
बेचारी it. This time, I'm done for. भागी। Wait, so Klee's treasure is a bomb? It made short work of that abyss mage. ओके मैंने पॉइंट्स दे दिया, लाइक गोल अपडेट कर दिया है। मेरे पास सिर्फ 3 5 स्टार। अच्छा आपने वो नहीं दिया। शी हैव काइंड ऑफ ए डॉग स्पिरिट। कौन? सुक्रोस यार कर दो फ्लोर। हम तुम्हारे और मेरे करेक्टर्स लगभग सेम पे हैं, थोड़ी हेल्प हो जाएगी। कौन से वाले अकाउंट में? इस अकाउंट में तो कर चुका हूँ मैं। आज ही मैंने हमको 7:30 से लेके नहीं 8 बजे से लेके 9 बजे तक मैंने स्पायरल अबिस कंप्लीट किए हैं। काफ़ी फ्लोर 4-5 फ्लोर इकट्ठे किए हैं। 4 पे था मैं, 4 या 5 पे था और ये 7 क्लियर कर चुका हूँ। 5 6 7 3 फ्लोर किए मैंने। 4 पे था मैं। 4 का भी 1 स्टार कम था, वो भी किया था मैंने। आई एम फ्री टू प्ले प्लेयर एंड ओनली वांट न्यू कैरेक्टर्स नो ड्यू टू कंस्ट्रक्शन बट आई गॉट C1 Chichi C1 अल्बेडो अनफॉर्चुनेटली। अल्बेडो पे आपका C1 मिला, वो मुझे लगता है कि आपकी गलती है, क्योंकि आप सिंगल पुल कर सकते थे पिटी हिट होने के पास, या फिर और अल्बेडो मिलने के बाद उस पर करने की इच्छा नहीं होती। बट 4 स्टार के घर जा रहे थे तो बात अलग है ब्रो। बट मैं तो 5 स्टार को फोकस ज़्यादा करता हूँ। इमेजिन दिस मैच विद क्ली अल्ट सच अ पेन। मुझे गानी और मोना एक में ही 10 विश में मिल गई, क्या बात। ए के एक्स वीएन कैसे हो? वेलकम ब्रो। पॉग लॉल क्ली। पोक का मतलब पता चल गया मुझे, मैंने अच्छे से डिक्शनरी में चेक किया। मतलब पोक का मतलब वही था जो मैं सोच रहा था, एक्साइटमेंट एपिक मोमेंट गेम के अंदर। आई डिडंट न्यू दैट सिस्टम बिफोर। सिंगल वाला? No wonder Klee was rumored to be the strongest fighter in Mondstadt. Paimon for one is never picking a fight with her, ever. यही सेम बात वो डीलुक के लिए बोल रही थी। Why has she gone and run off? Some to do with the survival rules. Seems like it. Well then, let's head to the Knights headquarters and report to Jean. I'm still new to this community, okay. इनके डोमेन के डिज़ाइन भी अच्छे हैं, है ना? मैं फ्लोर 11 पे हूँ। फर्स्ट चैम्बर हार्ड है, कंप्लीट करने में दिक्कत आ रही है। फर्स्ट चैम्बर में ही दिक्कत आ रही है, 2 तो होएगा ही नहीं। मैंने फर्स्ट चैम्बर मेन अकाउंट में कर लिया था रीसेट होने से पहले, 3 स्टार भी हो गए थे, बट 2 में सिंगल स्टार भी नहीं हुआ, मतलब कंप्लीट ही नहीं हुआ मेरे से वो। और मैंने फिर ज़्यादा ट्राई भी नहीं किया। देयर आर वेरी फ्यू जेंशन स्ट्रीमर्स इन इंडिया। यस, दिस गेम इज़ वेरी अंडररेटेड इन इंडिया। यार सही, बिल्कुल सही बोला आपने। इंडिया में सेंस भी बनता है अंडररेटेड क्यों है, काफ़ी सेंस बनता है इंडिया में। आई डोंट माइंड इट बीइंग अंडररेटेड। मैं माइंड करता हूँ, मेरी ग्रोथ कम होती है अंडररेटेड होने से। आपको पता है कल ट्रेंडिंग में चल रहा था जेंशन इम्पैक्ट का, इंडिया में जेंशन इम्पैक्ट का ट्रेंडिंग में। मतलब आप फेसबुक पे ट्रेंडिंग पे क्लिक करो, गेमिंग पे क्लिक करो ना, तो लास्ट वीडियो जेंशन इम्पैक्ट की थी। किसी के 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर थे, उसने रेजर की कुछ करी थी, याद नहीं मुझे नाम, बट उसका लास्ट वीडियो ट्रेंडिंग पे थी जेंशन इम्पैक्ट पे। मतलब ट्रेंडिंग में लास्ट वीडियो पे थी। व्यूज भी काफ़ी सारे थे उस पर। सो यू गोइंग टू स्ट्रीम अंटिल चाइनीज लाइव स्ट्रीम? नहीं, ऐसे कब बोला मैंने। मैं सिर्फ ये स्टोरी मिशंस कर रहा हूँ, अभी सोऊंगा नहीं क्या रात को। चाइनीज़ की लाइव स्ट्रीम पता है कितनी देर बाद होने वाली है? कल दिन में 5:30 बजे होने वाली है। कोई नहीं होना चाहिए, नहीं तो बैन हो जाएगा। होप मोदी जी डजंट हैव आइज ऑन दिस गेम। नेवर मेक दिस गेम पॉपुलर इन इंडिया। धीरे धीरे कम्युनिटी ग्रो हो रही है। ब्रोली स्क्वाड कैसे हो? वेलकम ब्रो। बस ये मेंशन मत करो ये गेम कहाँ का है, दैट्स इट। गेम खेलो, इसको पॉपुलर करो, इसको शेयर करो, बट ये मत बोलो कि ये गेम कहाँ का है, ओरिजिन कहाँ से हुआ है इस गेम का, बस दैट्स इट।
नहीं बोलोगे तो पता नहीं चलेगा शायद। प्रत्यक्ष भाई कैसे हो, वेलकम ब्रो। क्या क्या हुआ लाइव स्ट्रीम में? कुछ नहीं, बस स्टोरी क्वेस्ट करने क्ली वाला, धीरे धीरे चलना है। डैडी इज हेयर। Klee? You're here too? एमजे पॉग। I turned myself in. टर्न माय सेल्फ इन। अरे बेचारी। ओ भाई। I hurt someone. बट वो भी स्मैश था। I broke the rules. I'll never see the light of day again. Oh. Klee, I need you to answer me. You said someone was injured. Where are they? Someone is injured. लोल आज नहीं। अरे मतलब वो 9:30 को जो होना था, कल होने वाली है, वो कल होने वाली है ब्रो। प्रत्यक्ष भाई सीरियसली आज तो नहीं थी ना, कल थी ना। कहीं मेरे को और मेरी और मिस हो गई हो। सो इनोसेंट। अच्छी चीज को एक्सेप्ट करना चल चाहिए, कहाँ कहीं भी हो रहने दो। हाँ कल फ्री जेम्स वाले कोड बताना। हाँ कोड पता चलेंगे कल। बालक हो तो ऐसे हो। हाँ कल होने वाली है लाइव स्ट्रीम। कल मैं लॉन्ग लाइव स्ट्रीम करने वाला हूँ गाइस, 2 से लेके 12 बजे तक लगातार। 2 से लेके 12 बजे तक लगातार करने वाला हूँ। और चाइनीज़ वाले भी करेंगे। अगर किसी को चाइनीज़ वाले में स्पॉइलर नहीं चाहिए, इंग्लिश वाली करनी है तो वो भी करेंगे विदाउट स्पॉइलर। मैं नहीं बोलूँगा। मतलब जैसे कि मान लो 9:30 बजे होने वाली है ना, तो मैं 8:30 बजे बंद कर दूंगा स्पॉयलर्स। मतलब जो अपडेट आने वाले उसके बारे में बात करना। स्पॉइलर फ्री रहेंगे ताकि जो इंग्लिश वाले हो सके तो वो कर सकें। वैसे 1 घंटे की रहेगी तो 8 बजे भी कर सकता हूँ मैं बंद। मतलब कोई कहेगा कि आएगा ना ब्रो मैंने देखी नहीं है, आप स्पॉइलर मत करना, उसके बाद स्पॉइलर नहीं करेंगे, ठीक है? ताकि इंग्लिश वाले में फिर आप अच्छे से बात कर सकते हैं जो नया अपडेट आने वाला उससे रिलेटेड। मैराथन स्ट्रीम क्या? हाँ कह सकते हो, कल लंबी स्ट्रीम होएगी और स्ट्रीम पे डिनर होएगा कल रात को। डेट्स रियली लॉन्ग स्ट्रीम। हाँ जैसे कि आज भी कर रहे हैं, बीच में 2 घंटे का ब्रेक ही लिया था मैंने 2-2:30 बजे से शुरू कर दी थी, 9 बजे बंद करी, और अब 10 बजे शुरू करके 10 तो कहाँ हो, लेट हो गया था, 11 बजे शुरू करके करी है, 11:45। Why is that? The person that clue blue was in a mismatch. But Mr. Fluffball was only a thief. He didn't deserve to blow up. Hey, come on बेचारे now. क्ले। Paimon already told you that the Abyss Mages are the मकबैंग bad नहीं होगा guys. भाई। And actually, मकबैंग they're the worst kind of bad guys कुछ you भी। can imagine. They don't just hate the good guys, they hate all people. Their enemy is humanity itself. Mr. Fluffball was a bad guy on purpose? Mr. Fluffball is the enemy of मिस्टर फ्लफ बॉल बोल रही बेचारे को बार बार। What? I don't get it. This was an oversight on my part. I did not tell you these things before because you are still young. In fact, the Abyss Order is a hostile force in Mondstadt, which has been unusually Saber, active what the hell? lately. क्या हो रहा है? सेबर क्या हो रहा था ये? Also, she is unaware of the environment of the bad people. हाँ. Clearly just missionary, but Jean means नहीं, misunderstanding है. He is just innocent. Aha! That's it! Paimon understands now. ये They were समझदार है tracking फिर भी. down poor Size के Clay हिसाब because से. they heard rumors about her treasure. Just like the way Paimon's first reaction was to try and get her hands on... no. To try and get the facts on the treasure. Saber account hacked. So- Ooh. Does that mean? In light of your contribution on this matter, I will allow you to take part in the next Ludai Harpastum. लूडा है पश्चिम क्या चीज होती है? Past him? Whoa! होता क्या ये मेरे पर वो डांस कर रही थी। ओ भाई क्या डांस कर रही है? ओ भाई क्या डांस कर रही है, कितनी चल रही है। ओ भाई दिन भर देखते हो इसको ऐसे। यार ये इमोजी होनी चाहिए थी यार, मैं कैरेक्टर को ऐसे डांस करा सकता काश कभी भी।
इमोजीज होनी चाहिए थी इसके अंदर, इस गेम के अंदर होनी चाहिए थी। ओ भाई क्या डांस कर रही है। Miss Honorary Knight, you've gotta come too. Whoop-de-doo! It's a happy ending! Except... Except what? Klee, where did you hide the डोंट treasure टेक to ऑप्शन begin लेटर with? डांस काफी देर कर लिया था ब्रो। Were you trying to blow up the fish in Starfell Lake again? I wasn't. I swear I wasn't. She's giving us that look that means play along. Oh, Jin notices too. Klee? I'll see myself to solitary confinement. Paimon बेचारी। bets Klee must get bored in there all by herself. तेरी आँखों में आँखें डाल के, ओ आँखें बंद कर ली। Bro, I got best artifact later cup anemo damage bonus page stats। क्या बात, काफी इलम। कैसे हो ब्रो, क्या फोटो आई है? तुम्हें कौन सी फीमेल कैरेक्टर पसंद है? वाइफू, वाइफू के बारे में पूछ रहे हो? गान्यू अभी के लिए सबसे बेस्ट। वेट, इसमें ये भी लिखा है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। रात को जेंशन लाइव क्यों? क्योंकि दिन में पता नहीं लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता स्टोरी क्वेस्ट देखने में, तो मैं रात को स्टोरी क्वेस्ट कंप्लीट कर रहा हूँ। Guess who? That's Paimon's voice I hear. Need help busting out of this joint? Ooh, yes, please. Wait, no, I can't. Klee needs to be a good girl and think about what she did. Stop tempting me. Anyway, while I'm grounded, I'm making an extra special new treasure, the Ludi Harpastum version. When you say treasure, I made it into the shape of a harpastum and everything. It looks so cute. You disguised a bomb as a harpastum? क्या होता है ये चीज? होती क्या गाइस, कोई बताएगा मुझे? कचिंग इज द बेस्ट वाइफ इन द एंटायर गेम। सबकी अपनी चॉइस होती है ब्रो। बिकॉज ऑफ हर वॉइस एक्टर, जब तक नहीं आती होता तब तक मैं डिसाइड करूंगा, बट होता हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि हार्ली क्वीन जैसी होएगी। सिंपली क्रेजी, सिंपली क्रेजी, सिंपली एंड क्रेजी। Just wait for Ludi Harpastum. Oh yeah, they're gonna love it. yeesh, if Jean was listening to this, Klee might find herself grounded for an awful lot longer. डन, दैट्स इट। ये वाला काफी छोटा था। किसने कहा कि मेरे को लगता है क्ली वाला सबसे छोटा क्वेस्ट था। माय फेवरेट वाइफ इज हुता, ये तो हो गया। हुता इज यांड्रे। क्या है यांड्रे, क्या चीज होती है? ये स्वॉर्ड मस्त लगती है डीलू पे यार, बहुत मस्त लगती है। तीनों अनलॉक हो गए हैं। जीन वाला अनलॉक कर दें? वेट, मेरे पास एक एक्स्ट्रा थी यार। चौंगली, वेट, मेरे पास एक की थी यार। कैसे? मैंने क्ली पे यूज करी थी क्या? अच्छा हाँ, मैंने क्ली पे यूज करी थी, सही बात है। फिर मैंने गलत लिखा हुआ है टाइटल में।
क्लीव एंटी एंड मोना का लिखा था मैंने। क्ली का हो गया है। किसका करें अब? चाइल्ड का करें। चाइल्ड, जोंगली और गान्यू। चाइल्ड का करें, जोंगली का करें, किसका करें भाई? मैंने चाइल्ड का लिख दिया, चाइल्ड का ही कर लेते हैं। वेट, जोंगली का पहले आता है ना? चाइल्ड, चाइल्ड द बेस्ट बॉय। डैडी जोंगली, चाइल्ड। चलो मैंने टाइटल में चाइल्ड का लिख दिया था, चाइल्ड का कर दिया। चाइल्ड का है तो वैसे लंबा काफी। कौन से वाला था चाइल्ड का, किसी को याद है? ये तो गान्यू का है। सीली चैप्टर, मोनोसीरियस, मोनोसीरस, 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 ये वाला है। आइटम फोर्ज्ड। रिफाइंड वुल्फ ग्रेवस्टोन। वुल्फ ग्रेवस्टोन नहीं है ये। ब्लैक क्लिफ। इस पे लिमिट क्यों लगा रखे हैं, मेरे को समझ नहीं आया अभी तक। वुल्फ ग्रेवस्टोन नहीं है ये, बैक क्लिफ है ये। Harpestum is an ancient ball game. थैंक यू ब्रो, बट फिर भी मेरे को क्लियरिटी नहीं हुई है। बट थैंक यू, एटलीस्ट आपने जवाब तो दिया। एक काम करते हैं, ये फाइट कर लेते हैं। गेम में पार्टिसिपेट करना है, अच्छा। बस एक फाइट कर लूँगा ताकि रेजिन का तो वेस्ट ना जाए। Burst forth. Absorption test. क्रिट नहीं करा। Animal hypostasis amulet. Moment of birth. Nice. Wow. गया। Retribution. Oh my god bro, you're playing from morning. Don't you feel tired? 2 घंटे का ब्रेक ले चुका हूँ बीच में, फिर से स्ट्रीम कर रहा हूँ। ऐश ब्लैक ड्रैगन कैसे हो? 2 घंटे का ब्रेक ले चुका हूँ ब्रो। एंड आई नेवर फील टायर्ड बिकॉज ऑफ गेमिंग। इतना बढ़िया गेम है ब्रो, कैसे टायर कर सकता हूँ मैं?
मेरे को टायर्ड फील होता ही नहीं, कितना खेल लूँ मैं इस गेम को। You should use Albedo ult first for elemental damage bonus, then Diluc ult. Elemental damage bonus? Albedo के ult से elemental damage bonus कब से मिलने लग गया? एलिमेंटल मास्टरी की बात कर रहे हो आप? गेमर्स डोंट गेट टायर्ड। बैठा हूँ यार इतनी बढ़िया चेयर पे, इतनी आरामदायक चेयर पे बैठा हूँ आराम से, टायर्ड होने वाली क्या बात। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट प्लस प्लस। डेडिकेशन, हेल्थ का भी ख्याल रखना। अरे ब्रो आपको पता नहीं, मैं पहले कोडिंग किया करता था, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर था को, मतलब बहुत ज़्यादा हैकाथन, रात भर हैकाथॉन्स करी हमने। मैं रात तो भर काम की है, कंप्यूटर का कोडिंग की है, ये तो फिर भी गेमिंग है, आदत है मेरे को बचपन की। उसके अलावा मैं बिंजिंग भी बहुत करी है मैंने, एनिमे बिंजिंग, सीरीज बिंजिंग। एक दिन में दो सीजन कंप्लीट किए हुए हैं मैंने। 10 घंटे बैठा हूँ मैं कंप्यूटर के आगे सिर्फ बिंजिंग करने के लिए। और कंप्यूटर फिर भी ठीक है, मोबाइल पे भी करिए। Be on your guard, traveler. बट अच्छे नहीं होता आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरे को तो आदत है। बट Oh, why is that? Has something happened? Yes. As unusual as this may sound, numerous eyewitness reports have confirmed an active ruin guard presence in this area, even though this is far beyond their normal area of activity. Sergeant sent someone to find out just where these ancient machines might have come from. It appears that they simply left their ruin and marched off all of a sudden, for no clear reason. ruin guard. So did somebody wake them up? As I say, the reason is still unclear. We have very little intelligence at present. Moreover, the ruin in question is of the especially spooky variety. Strange noises are often heard coming from within. As such, we are not permitted to investigate until the order comes through from headquarters. Okay. Albedo ult की एलिमेंटल मास्टरी वो अल्ट पे मिलता है क्या? बट सुक्रोस का एलिमेंटल मास्टरी देखोगे आप? एक बार दिखाऊंगा आपको सुक्रोस का एलिमेंटल मास्टरी। अल्टीमेट सुक्रोस को अल्टीमेट एलिमेंटल मास्टरी मॉन्स्टर बना रखा है मैंने। ब्रो इफ यू आर अ कोडर देन बिकम अ हैकर। है लोगों को ऐसा क्यों बोलता है कि मैं, लोगों को कोडिंग आती है तो हैकिंग करना आसान है? मतलब बिल्कुल भी नहीं है ब्रो, हैकिंग बिल्कुल अलग चीज़ होती है। कौन सा लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर डेवलपर थे? मैं एंड्रॉयड स्टूडियो करता था, मतलब जावा कह सकते हो मोस्टली, बट एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर अलग तरह की जावा हुआ करती थी। मैं वेब मोबाइल ऐप डेवलपर था एंड्रॉयड स्टूडियो से। गूगल का एंड्रॉयड स्टूडियो था ना, उसमें उसका एक्सपर्ट कह सकते हो, एक तरह से कॉलेज लेवल एक्सपर्ट कह सकते हो। फेवरेट वेपन सैक्रिफिशियल सेट, हर एक वेपन का सैक्रिफिशियल जबरदस्त, बेस्ट फेवरेट वही लगता है मुझे। बॉसेस रिस्पॉन्ड टाइम कितना है? रिस्पॉन्ड टाइम मेरे ख्याल से लिटरली 30 सेकेंड होता है, बट आपको दूर जाना पड़ता है। हाइपोस्टेसिस कहाँ, मतलब आपको मैप में दूर जाना पड़ेगा और रिस्पॉन्ड 30 सेकेंड के अंदर हो जाता है, बट फिर भी नहीं हुआ ना तो गेम एग्जिट करके वापस ऑन कर लो, हो जाएगा रिस्पॉन्ड वहीं पे ही खड़े खड़े। वी आर नॉट परमिटेड टू मिशन द ऑर्डर comes through the hardcore. The one can never be too cautious. मेरे लिए तो always so inefficient. बोल देता हूँ। वो लोगों का सच है, हाँ समझा मैं। ओके। Sorry? Did you say something? नहीं सुना इसने। Was that supposed to be your impression of Master Diluc talking about the Knights of Favonius? ओह अच्छा। In any case, the only sensible strategy in the meantime is to increase Millilith patrols. We must not let innocent civilians come to harm. That's a good point. Ruin guards are probably pretty dangerous for regular folk. I'm also searching job for software developer। अच्छा, कॉलेज में क्या करता था, उसके बाद कभी इंटरेस्ट नहीं लिया। पहले तो बहुत ज़्यादा अच्छा डेवलपर हुआ करता था,
काफ़ी बढ़िया, काफ़ी सारी नॉलेज हो गई थी, बट मेरे को जॉब नहीं करनी थी, बिल्कुल भी नहीं करनी थी जॉब, तो इसलिए। और क्या कहते हैं, स्टार्टअप अपने बस की बात नहीं थी, इतना तेज दिमाग नहीं था कि स्टार्टअप कर सकूं। ये भी एक तरह का स्टार्टअप ही कह सकते हो, यूट्यूब चैनल इज a startup, kind of a startup. Wow. Uh, I'm very grateful indeed for the offer, but it just wouldn't be worth the risk. Oh, don't worry about that. This one beats up ruin guards for breakfast. Breakfast. I do know a little self-defense. Not to brag, I just could beat 10 of you in a fight. The self-confidence of young people is an extraordinary thing. Well, if you're genuinely offering, I did see some ruin guard footprints on the hillside, but since then I've been too busy warning passers-by to investigate myself. Footprints, eh? Interesting. We'll take the case. While the Millilith stands guard, evil shall never prevail. On behalf of the Millilith, I salute you, traveler. You have my gratitude. I will rendezvous with you once I have finished my patrol. Mighty Cyclops Adventure. यार वो अनोइंग किड आने वाला है इसमें ना। This footprint is huge. It has to be the one that guy was talking about. And here's another one. Yep. Seems the ruin guards did come out for a walk after all. At last year 40, congratulations bro. हमारे यहाँ तो स्कूल शुरू हो गए हैं, तो रो क्यों रहे हो ब्रो? फ्रेंड से मिलोगे, नाइस। 700 सब्स कहूँगा, थैंक यू बॉस क्रे, थैंक यू। 700 सब्सक्राइबर्स, थोड़ा बड़ा नंबर नहीं लगता है 700, मतलब अब लग रहा है कि मैं हाँ क्लोज हूँ काफ़ी। 699 इतना नहीं लगता था क्लोज जितना 700 लगता है। डिफीट द रूइन गार्ड, पीस ऑफ केक। खड़ा Orders given. Orders received. Absorption test. Witness my great undertaking! Well, that's one down. Let's keep looking around. Maybe we'll find some more. कहाँ 450 और कहाँ 15, कहाँ 0, कहाँ 0। मैंने कहा था इसको एलिमेंटल मास्टरी मोस्टर बना रखा है मैंने ब्रो। 450। पाइमोन थैंक यू फॉर द कॉन्ग्रेचुलेशन। 450 एलिमेंटल मास्टरी 80 एलिमेंटल मास्टरी एलिमेंटल मास्टरी ऑफ कोर्स होनी थी यार। इंस्ट्रक्टर से बॉन्डर दे रखा है इसको बॉन्डर शो पे, और माना कि इसको वेरिडेशन % दूंगा बाद में जाके, बट बॉन्डर स्ट्रोक तो हमेशा रहेगा इसके पास। और इनको मैंने अपग्रेड कर दिया तो क्या होगा? ये तो चलो 3 स्टार है, ये वाला 4 स्टार है, इसको कर दिया तो इसको अपग्रेड कर सकता हूं मैं। 1000 एलिमेंटल मास्टरी करके दिखाऊंगा, इसकी हो जाएगी। उसके ऊपर से मुझे यहाँ मिलती है इंक्रीज 54, और उसके अलावा
यहाँ पे भी एलिमेंटल मास्टरी इंक्रीज होती है, उसके अलावा यहाँ पे भी एलिमेंटल मास्टरी इंक्रीज होती है भाई। You should really बट bring मेरी the Knights रिएक्शंस of नहीं होती है इतनी। Favonius with you next time. मैं अगर चीजी के साथ मेल्ट कर दूं ना डीलुक का, आय हाय हाय क्या डैमेज होगा। बट लेकिन उसके अंदर एलिमेंटल मास्टरी वो वाली काउंट नहीं होगी जो सुक्रोस के ऊपर है। चीची के साथ जो मैं डीलुक का मेल्ट करूंगा, इससे 12 रिएक्शन के अंदर काम आएगी जो कि उसकी है। अल्बेडो का एलिमेंटल मास्टरी काउंट होगा, जो टीम को एलिमेंटल मास्टरी प्रोवाइड करती है वो काउंट होगा, बट बाकी में नहीं काउंट होगा। आ गया अनोइंग किड, आई हेट दिस किड। धीर भाई कैसे हो? वेलकम ब्रो। कोई हेलो नहीं, कोई कुछ नहीं, टॉप टाइम सीधा। Hey you! Check this out! Isn't it awesome? नो What is he wearing? I've never seen one this close before. Have you ever seen one? इसका नाम क्या था? टूसर, अजीब सा नाम था इसका। Excuse me. His name is Mr. Cyclops, actually. What sort of dumb name is Ruin Guard? Mr. Cyclops? Aw, that's cute. Wait, what? Do people seriously call him that? Yep, my brother said so. And he's the best toy seller in the whole world. It's his job to sell this kind of stuff. Right now, he's at the Institute for Toy Research in Liyue. That's where Mr. Cyclops has come from. बारिश कैसे हो रही है? It's always nice to meet someone else who likes toys. So tell me, where'd you get your toy from? Must be a pretty new kind, huh? I've never seen one that can fly and talk before. ओ भाई पाइमोन को टॉय बोल दिया भाई। लिमिटेड एडिशन, जेलस मच? Hey, just because you get to play with Paimon all the time does not mean that Paimon's a toy. प्ले विद Greetings. पाइमोन एट द Have you found anything? बेचारा, बेचारी पाइमोन। A child? What's the situation here? We just, found him. Uh-uh. You shouldn't be out here, boy. There are killing machines in the area. It's extremely dangerous. Killing machines? You mean ones that look like this? Precisely. And including this one. It's not moving now, but if it were to wake up, the consequences would be... You Limited take that edition, back. jealous much? Mr. Cyclops is not a killing machine. He's one of the good guys. Mr. Cyclops? We shouldn't be talking to this guy. If he's saying mean things about Mr. Cyclops, बिजली गिर he's जाएगी। definitely a bad man. I'm just trying to help. बेचारा। I think you lost him. Maybe let me handle this. I've always been hopeless at dealing with children. Well then, why don't you get back to your normal job and leave us to do the babysitting? मंदिर की घंटी हो क्या Seems I have no जो other भी choice. बजा जाता है। Very well. I will continue with my patrol. Please escort the child to somewhere safe. It's much too dangerous here. The mighty Mr. Cyclops scared off the bad guys once again. My name's अपने Tisa. select हो गया। I came all the way from Snezhnaya to look for my brother in Liyue. But I'm all on my own. And I don't know where to find him. You came all the way from Snezhnaya? Oh, I think this is the part where I give you this. Here you go. What is it? Looks heavy. What the? ब्रो बिजली गिरे जा रही है आसपास। बिजली गिरेगी और स्क्रीन शेक होएगी। So much more, so much more. My brother said I should take it with me. He said, find a nice person to give this to, and they will take good care of Tooser. Your brother makes a good point. Still, it's hard to believe you made it all this way armed with nothing but a few bags of Mora. Your family must be super rich. Paimon never knew you could make so much Mora from selling toys. Can you not help me repeating GOB of need to farm for Albedo? अभी तो नहीं हो पाएगा ब्रो। कोई चैट में हेल्प कर देगा तो बात अलग है। हैशटैग रिच किड। I will gladly take it. I will gladly take it and give it to your brother when we find him. Yay! Thanks,
nice lady. All right, now we gotta make a pinky promise. You make a pinky promise, you keep it all your life. You break a pinky promise, I throw you on the ice. The cold will kill the pinky that once betrayed your friend. The frost will freeze your tongue off so you never lie again. Wow, that one nursery rhyme kinda says all you need to know about Snezhnayan culture. Well, if we want your babysitter before, we sure as heck are now. But where should we look for your brother? ब्रो पूरी स्क्रीन हिल जाती है जब भी वो होता है, बिजली गिरती है। नॉर्थलैंड बैंक। Great idea. All right, off we go. All right, finally, now I get to see my brother. Go to Northland Bank. गाइस कल जो वीडियो पे रिएक्ट करने वाला हूँ ना स्ट्रीम की शुरुआत में, वो बहुत मस्त होने वाली है। तुषार वेलकम, कैसे हो? इस एरिया के अंदर होगी वो वीडियो पूरी की पूरी। बहुत बढ़िया वीडियो है वो। अब देखोगी आप, देखी होगी काफ़ी लोगों ने, बट कौन सी वीडियो वो नहीं बताऊँगा, कल ही देखना, स्ट्रीम शुरू होगी जब। हर एक स्ट्रीम पे एक वीडियो का रिएक्शन होता है शुरुआत में। अभी भी किया है, दिन वाले में भी किया था और डेली करेंगे। मैं मस्त, आप कैसे? मैं भी बढ़िया ब्रो, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। अब जो स्टोरी क्वेस्ट है रात की स्ट्रीम में करेंगे। Don't you think, sir? How can you? Relax. Once in a while. पुराने वाले, नए वाले तो ऑब्वियसली बीच में कंटिन्यू कर सकते हैं। What is he doing here? Yay, my brother! I found you! I know that voice. Why, if it isn't my little brother Tooser! My goodness! What a nice surprise, Tooser. I thought I would have to wait till I return home before seeing you again. How are the others? Sister Tonia and brother Anton? Is everybody keeping well? They miss you a lot. Tonia prays for you every day at dinner. Wait a second. What are you doing here in Liyue, Tooser? How have I not heard anything about this? Well, what happened was, I saw a boat that looked like it was selling toys, so obviously I thought you were on board. And then, when I got off, I just kept walking and walking, and then I found a Mr. Cyclops. Mr. Cyclops scared off a bad guy, and then I found this nice lady to help me come look for you. I got car new. तेजस, congratulations bro. क्या बात है ब्रो। 1 तारीख को मैं भी विश करने वाला हूँ यार, विश को भी विश करो, गुड लक विश करो। सैड क्यों बोल रहे हो? आपको बड़ा सैड फील होता है यार। कंग्रेचुलेशंस, गिव मी गानी। मिल जाएगी ब्रो, मिल जाएगी, ट्राई करते रहो, या सेविंग कर लो, 1 तारीख को इकट्ठी विश कर लेंगे। सो ट्रूसे से स्टो अवे। Cool. Suddenly Paimon doesn't feel so bad about taking Tooser's money. Tooser, what you did was extremely dangerous. कितनी I'm लाइन so जल्दी happy बोल to गई see वो। you, really, I am, but please, promise me you won't do anything like this ever again. Okay, I promise. Please don't be mad at me. I'm not mad at you. मजा I आता है just साइड care लिखने about में। your safety, that's all. मजा आ गया। If पिटी you क्लोज hadn't थी, met these नाइस nice नो। people, things could have been a lot more dangerous for you, Tooser. 50-50 था I क्या? hope you said a big thank you to them. Yup, I always remember my pleases and thank yous. Oh, so you did notice we were here. You were just ignoring us. इसका स्टाइल भी मस्त लगता है, ये बोलती बहुत है बट Forgive me, इसका बस it's always posing बड़ी family मस्त first लगती where है। I'm from. Don't take it personally. I know we've had our differences up to now, but a few minor quibbles aside, we get on quite well, don't you think? Do you mean that, or you just keeping up appearances? You got a lot of nerve. Come on, you know I'm just a pawn and all that, just doing my part. As for who wins, who loses, and how each side deals with the consequences, I prefer to leave all that up to the ones playing the game. I'm much more interested in who wins and who loses when it comes to our little sparring matches.
sounds like you're ready to get your butt kicked again. You're forgetting something about me. I, Tartaglia, spend every second getting stronger. Don't expect to have it quite so easy next time. Also come a long way since then. Whoa. You aren't gonna fight now, are you? Maybe not right now. Not while my kid brother is watching. Why do you want to fight the nice lady? Are you guys enemies? No, not at all. Allow me to formally express my sincerest gratitude for taking care of my darling brother. His safety matters very much to me. I'm still keeping my eye on you. I want to anger Childe. Anyway, Paimon has a question. Tuser said something about you being a toy seller. इसको स्टाइल क्यों अच्छा लगता है मेरे को? Supposed to be one of the Fatui's heart. बोलती ये है बकवास करती है और ये चुपचाप खड़ी रहती है और स्टाइल मारती रहती about है. that. Shh, look. I only told him that so that he'll look up to me. In the eyes of a child, working with toys must be the best job imaginable, right? I don't want my family to have anything to do with the Fatui's, or should I say Snezhnaya's, darker side. The older ones already know that I serve the Tsaritsa, but Tuser is still so young, and in his eyes... As I was saying, I remain Snezhnaya's greatest expatriate toy seller, currently attached to the Liyue branch of our Institute for Toy Research. That's right. My brother's the greatest. He's Mr. Cyclops' bestest friend. Just humor me in front of Tuser, if you would be so kind. पाइमोन ही सब yes, बोलती है, Ekaterina. ट्रेवलर ज्यादा कुछ I will नहीं deal with बोलता, the क्या issue of बोलूं? that outstanding payment right away. ब्रो बट आपके लिए ये पता है नहीं, आपकी पेटी 50-50 थी 100%. But Master Childe, would it not be a little improper to ask you to deal with... मतलब लास्ट प्राइस तक क्या मिला था आपको करेक्ट बैनर पे? A bet is a bet, isn't it? And if you lose a bet with an agent, well, गानू you से might as पहले well क्या get a मिला little था? exercise out of it. 100 पे थी. Going off to sell वो toys फिर आपकी now? गारंटेड थी वो. That's right. As much as I'd love to catch up a little longer, Tuser, duty calls. 1 तारीख को तो I'm मिल ही sure जाती this है अगर nice चाहिए lady थी here तो. will be happy to keep you company while I'm out, though. क्योंकि आपको वो तो मिलने वाला था ना. Babysitting for 5 you? विशेस तो मिलने वाली थी एटलीस्ट. Sure. I really like this lady. And anyway, she made a pinky promise to take डीलुक good मिला care था ना. of me. हाँ. Ah, well, it sounds like Tuser Eliminate really था से likes ज़्यादा you, cute है, and that you've obviously. already made a pinky promise to take good care of him anyway. They're ganging up on me. Okay, sure. Then I'm in your debt. Here, take this as Tuser's entertainment fund. I want him to have a good time while he's in Liyue, so take him anywhere he wants. If need 1 तारीख को be, क्या है? you शॉप may find रीसेट me by होती the है हर river 1 near तारीख को. Qingshu Pool. I'll see you both around. सबके पास डीलुक है और डीलुक ही सामने खड़ा है. एक तारीख को पीटी रीसेट होती है ब्रो. ओह सॉरी, शॉप रीसेट होती है जिसमें आपको 5 विशेस मिलती है शॉप के अंदर पाइमोन्स बार्गेन में, स्टार्ट ग्लिटर एक्सचेंज में, Looks like we'll be Stardust hanging out में. with Childe's kid brother for a हर 1 तारीख while. को कर रखी होगी आपने. So, where are we going to play first? How about we start with... Huh? What are those super colorful winged things? They're called kites. The kids in Liyue love them. Hello there, dear. You look like you've come a very long way. Let Granny guess. From what you're wearing, I would say... Snezhnaya. That's right. How do you play with these kite things, Granny? When the wind picks up, you let out the string and whoosh! The kite will fly into the air, up, and away. Wow, that's amazing. आपके पास डीलुक नहीं और आपको चाहिए भी नहीं. क्या बात. Mr. मिल गया तो क्या करोगे? Cyclops, यूज नहीं करोगे? I'm sorry, I want to fly Mr. Cyclops high into the sky so all the kids can get to know him. Well, I can do custom builds, but I'll need some amount of reference material. Will this picture do? I drew it myself. I bring it with me everywhere. I'll manage.
Still, I must warn you that custom builds can really be quite expensive. We should be fine. Childe was pretty generous with that entertainment fund. But then again, throwing money around willy-nilly is, kinda irresponsible. I don't know how to use Childe. Please, my opinion. Please, any opinion. आपके पास है Childe? I have Childe, Mona and Chichi. Okay. तेजस आपके पास है Childe? Childe बहुत इजी है ऐसे. Childe को अगर यूज़ करना है तो उसको दो आप 4 पीस वाटर वाला सेट जो है ना, जो कि ड्रैगन स्पाइन में जो मिला था, वो दो, बहुत बढ़िया है. 4 पीस सेट दो, बहुत बढ़िया है उसके लिए. ठीक है. उसके अंदर आपको मेन स्टैट में, सब स्टैट तो ऑब्वियसली आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, बट मेन स्टैट में देखना, सब स्टैट्स में देखना क्रिट रेट अच्छा बन जाए. और मेन स्टैट में आप देख सकते हो वही ऑब्वियसली HP अटैक तो होएगा ही. टाइम पीस के अंदर अटैक परसेंट, कप के अंदर हाइड्रो डैमेज बोनस ऑब्वियसली, और क्राउन के अंदर क्रिट डैमेज. अगर सब स्टैट्स में क्रिट रेट अच्छा हो गया तो. नहीं हुआ क्रिट रेट अच्छा और क्रिट डैमेज सही है, 100 तो नहीं, 120-30% है एटलीस्ट, तो क्रिट रेट का वाला क्राउन दो. और अगर दोनों अच्छे हैं तो भी क्रिट डैमेज का दो, और दोनों ही अच्छे नहीं हैं तो अटैक परसेंट का क्राउन दे सकते हो. उसे सपोर्ट के लिए चाहिए गानियों के साथ. अरे भाई, गानियों के साथ सपोर्ट बहुत अच्छा करता है चाइल्ड. उसका आप देखो फाइटिंग स्टाइल क्या कहते हैं, टेक्टोन का, वो चाइल्ड और गानियों को साथ में यूज़ करता है. क्या तगड़ी फाइटिंग करता है. सारे एनिमीज फ्रीज रहते हैं जब भी वो फाइट करता है, और सबको 1 सेकंड में किल कर देता है वो. माना कि उसके पास तो C6 है हर एक करेक्टर, बट स्टिल बहुत मस्त है चाइल्ड उसके साथ, गानों के साथ. और डीलुक के साथ भी बहुत बढ़िया वैसे. चाइल्ड मेन DPS है. गानों को आप सपोर्ट बना सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं. गानों काफ़ी अच्छी सपोर्ट बन सकती है, DPS भी बन सकती है, बट सपोर्ट भी बन सकती है, कोई बुरी नहीं है सपोर्ट में. उसका E और Q सपोर्ट के अंदर बहुत अच्छा चल सकता है. मेरे पास गाने मिलेगी तो मैं उसको सेकंड DPS और मेन सपोर्ट बनाने वाला हूँ. मतलब मेन टीम में सपोर्ट और सेकंड DPS. Your words, not mine. But yes, we're on the same page here. Either way, it's time to talk prices. Fine, fine. I've neither the time nor energy to bargain with you at my age. I suppose this price will do. DPS मस्त. कचिंग, हाँ, कचिंग मेरे मेन अकाउंट में है. Worry not. Just leave it to me. Ganu can be everything. Yep. Stop. So can it be Jean. Ganu can't be healer by the It way, would be a mighty crime. so she can't be everything. All the way to Lila and never try the food. Hello, welcome. Table for 3? She can't take tank और healer दो. यही बोला मैं भी. Healer भी नहीं और tank भी नहीं है. सही बात है. A choking smell? Oh, you must be referring to our signature spicy chili scent. Spicy chili? You said everything. Can't eat spicy food. Oh, what a pity. A person who can't eat spicy food misses out on half of life's joys. Is it really that bad? Support और Maonos DPS दोनों have to OP have हैं lots and exactly. lots of sugar, and the oil has to be extra virgin vegetable oil. Wow, we've got a real rich kid on our hands. Looks like Wanmin Restaurant's dishes aren't to Tooser's taste. Maybe we should go somewhere else. Will that be all? Any more special requests? What do you mean, Chef Now? Giving the people what they want is the very reason Wanmin Restaurant exists. If I thought for 1 second that I couldn't make a dish to satisfy this child's taste, I would have absolutely no business calling myself a chef ever again. Whoa, there seems to be a lot of professional pride riding on this. Then we'll leave it to you, Chef Now. We'll be eating here after all. Sure.
12:30 बजे नींद आने Let me लगी। say this first. Special good night, requests are going to cost you more than normal. Of course, we aren't going to demand prices anywhere near as exorbitant as the likes of Lily Pavilion or Sunya Kiosk. Is it just Paimon, or are premium custom orders in fashion lately? Still, surely there must be a little room for negotiation, right? अच्छा एक्स्ट्रा मनी के लिए। Ah, you folks. Let's go with this then. Any more haggling and we'll ruin the other customers' appetites. Thanks, Chef Mao. Please sit wherever you like. Your food will be here shortly. You enjoyed a meal specially made for you, sir. Ugh. It was a little too sweet. Paimon feels a little sick. 5000 करता। It was just right. Almost exactly like how my sister Tonya makes it. But this doesn't feel right somehow. Didn't we bring Tusser here to try Liyue's specialties? Whatever. So where do you want to go next, Tusser? I was so caught up looking for my brother when I first got here that I didn't get a good look around. Good idea! The hustle and bustle at the wharf is a specialty of Liyue Harbor too. ठीक है ब्रो, बार-बार हैगलिंग करना अच्छा नहीं लगता मुझे। Liyue's really got it. 799 क्यों किया? 12000 था मैक्सिमम। 33% डिस्काउंट। बहुत है यार। 50% तो बहुत कम हो जाता है। 50% से भी कम बोल रहे थे। Wow, this place is huge! And there's so many people! Are the waves here always like this? Don't they ever freeze? Given Liyue's climate, the area around the harbor's mouth probably never gets cold enough to freeze. Paimon is kind of the traveler's exclusive personal tour guide, but since this is a special occasion, Paimon can make an exception to help Tusser get to know the place. This place is Liyue's commercial hub, and it's been the biggest port in the Seven Nations ever since it was आप भी decided जा रहे हो? that Good night, Liyue bro. would take on the world through trade. स्टोरी क्वेस्ट इसलिए मैं रात को कर रहा हूँ क्योंकि दिन में भी यही प्रॉब्लम होती है। मैं गेमिंग कैसे हो? कुछ लोग आते हैं बट मोस्टली लोग चले जाते हैं स्टोरी क्वेस्ट में, इसलिए मैं अलग से स्ट्रीम कर रहा हूँ स्टोरी क्वेस्ट की, क्योंकि मैं स्किप नहीं करना चाहता, ये वापस देखना चाहता था। बाकी ऑब्वियसली कुछ लोग बोर होते हैं तो जाने, जबरदस्ती देखने का कोई फायदा नहीं है। मजा आ रहे तो देखो, नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं। दिन में हम इंटरेस्टिंग स्ट्रीम करने वाले हैं। स्टोरी क्वेस्ट तभी मैं रात को ख़त्म कर दूंगा करके सारे, आज नहीं तो कल या नहीं तो परसों ऐसे। Paimon, Tusser won't understand a word you're saying. Yeah, Paimon can't remember how the rest goes anyway. Well, guess Paimon will just have to explain this Paimon style. So this harbor is like Tevat's mouth, and it's the biggest mouth you've ever seen. All the nations float their boats over the sea into the mouth. The harbor goes nom 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 and has a taste of each boat and the cargo it has on board. Then Liyue Harbor rubs its big round belly in satisfaction because it's all stuffed full of delicious mora. परफेक्ट परफेक्ट। पाइमोन भी मस्त है, बस नींद आ जाती है कभी कभी, मज़ा आता है। ओके बट मैंने ये देखा है ब्रो, मैंने देखा है कि जब भी मैं स्टोरी क्वेस्ट करता हूँ ना, मेरे व्यूअर काउंट हाफ से भी कम हो जाता है। मैं नॉर्मल खेलता हूँ ना, कई बार 20 व्यूअर्स देख रहे होते हैं, स्टोरी क्वेस्ट में 10 से भी कम, 5 से 10 के बीच में रहते हैं। दैट्स हाउ यू एक्सप्लेन थ्रूपुट कैपेसिटी। Hey, what's that big metal hook over there? I want to see. Wait, Tusser, don't run off. After all that, he wasn't even listening. बेचारी पाइमोन यार, इसके भी डायलॉग होने चाहिए थे, एमसी के भी। मैंने सुना आगे डलेंगे। That
That metal hook is huge, and it gets bigger the closer we get. This is an anchor. Docked ships use it to hold themselves in position to stop the wind and waves from blowing them away. An anchor. Got it. But I think I might get it mixed up with Commodore Hook. Commodore Hook? Is this another one of your weird toy names? My brother always sends me a really big toy for my birthday. Commodore Hook, Black Steel Jack, Iron Tony. We keep them all in our backyard. As big as that anchor? Yeah, and that's why I can't bring them with me all the time. It's a shame. Wow! Using Fatui funds for personal gain? To think Snezhnaya would let their harbingers do that! All for some giant toys! But suddenly, it doesn't seem so strange that Tusser would treat a ruin guard as a giant toy. But my favorite has to be Mr. Cyclops. Even though I mostly came here to see my brother, the other big thing I wanted to do was play with Mr. Cyclops. Oh, are they selling fish over there? Let's have a look. बार-बार भाग जाता है. Quit running off! Is this where they sell fish? Wow, the fish here in Leo are so small. ये छोटी है. Whose fish are you calling small? Little kids shouldn't go around ruining others' business. He's just a curious kid. No need to get worked up. That said, these fish are actually pretty big by Paimon standards. Just how big are the ones you're used to, Tusser? Maybe 200 times your size? That's crazy big. Actually, that's still pretty small. Oh, bhai. Perfect. Hey! 200 of Paimon would squish you flat, you know. There are legends in my hometown about it. It's supposed to be a super delicious fish. I told my brother about it, and he went out to sea to catch one for me. A few days later, he returned with a humongous fish slung over his shoulder. Anthon and I were so happy. Are you sure that was a fish? Paimon thinks it sounds more like some sort of leviathan. Sounds like a topic that would interest Shingling. Ah. Hey, Miss Nice Lady, let's go over there to see the boats. I'll just... पकड़ो इसको, भाग रहे हैं. Tell me. What's wrong, Tusser? Are you tired? You don't seem so happy. I miss my brother. What? But we were just with him. Yeah, but for such a short time that it doesn't count. Take me to see my brother. I don't want to play anymore. That's children for you. Yep. You can have all the patience in the world, but it won't help you at a time like this. Well, we've played with Tusser long enough, haven't we? Paimon thinks we've tried our best here. Childe said that he'd be by the river near Chinshu Pool. Why don't we look for him there? Yay! Let's go! Let's go! आज तो काफी कम वॉचिंग है, 3 पे आ गया है. सीरियसली मैं चैनल को हर्ट होता होगा इतने कम वॉचिंग. कम हर्ट ही होता होगा. मैं बिना स्ट्रीमिंग के करने चाहिए क्या मुझे स्टोरी रिक्वेस्ट? कौन देख रहा भी है? नहीं, ये सो गया जो देख रहा था. हेलो, इज एनीवन ऑन द अदर साइड? मैं तो स्ट्रीम बंद करके सोलो कर लेता हूँ. अच्छा, तुषार और टीना 2 जने देख रहे हैं. Found him! There's Childe! Wait, he's talking to the treasure hoarders? You know what I'm here for, I trust. मैं दे ही रहा हूँ सर. Oh, you got lip. Making us guess, are you? If you तीन- want to तीन- join तीन up, लोग हैं, let me अच्छा, just ठीक say है. this first. Dandy kid like you ain't welcome. Oh, what a commendable imagination. Well, in the Tsaritsa's name, I suppose I should forgive you country bumpkins for your ignorance. For I am...
lucky brother. That's so cool. I've always wanted to watch you work. Well, why, yes, of course. For I am, the greatest toy salesman in Snezhnaya. आप देख रहे हो नाइस So cool. अच्छा आप देख को दिल्ली लिख दिया boy? So, will you buy or ओ not? भाई The toys that Snezhnaya produced 3 months ago will run you, yes, 600,000 mora, to be paid in full. Toys? And how much money? Wow. Is that what it's gonna cost to fix that head of yours? Look at that! Spreading joy and laughter to everyone! That's what toy selling's all about! I'll say it again. Toys from Snezhnaya, 3 months prior, 600,000 mora paid in full. Yeah, no. Sorry, sales boy. The same joke isn't funny twice. Or were you always cruising for a bruising? Alright then, I'll make things a little easier for you. I'll join the treasure hoarders. Perhaps you'll be more willing to pay when we're brothers in arms. Would you listen to yourself? You think we just let any old फिर से auto person correct हो into गया the क्या आपको? treasure hoarders? I'm not so sure you could hack it. Well then, why don't you put me to the test, dear seniors? I like to think of myself as quite talented in the field of treasure hunting. Looks like you're not gonna pack it up until someone packs you in. Alright then. Show us what you got. Truth be Let's told, go. we've set up a shop here because there's a fine little loot cave nearby. But the treasure hasn't been easy to get at. We've been at it for 2 days now. If you think you're up to snuff, why don't you have a crack at it on our behalf? Of course, that means that once you got it, it's ours. Don't try to sneak off with the prize now. Come on. If we can't do it, do you really think this guy stands a chance? An initiation test, eh? Interesting. It's been a while since I've been assessed by someone else. The loot's on the opposite cliff. We're gonna hang back here and watch the show. Huh, no problem. Don't blink though, or you might miss it. स्टाइल वेट 5वां कैरेक्टर नहीं है ओ भाई अच्छा है यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है ये स्क्रीन के सेंटर में क्यों है हैं ओ भाई काफी दिनों से चैनल पे फाइट नहीं करी है ब्रो सिर्फ ग्लाइडिंग करनी है सिर्फ ट्रायल किया था मैंने लास्ट टाइम हाँ बग्ड है क्या बात है यार यार लोगों को वो कैरेक्टर क्यों नहीं पसंद आते हैं ओ भाई टाइमर चल रहा था व्हाट द हेल मैंने ध्यान नहीं दिया टाइमर चल रहा है खत्म टाइम अब तो The loot's on the opposite cliff. We're gonna hang back here and watch the show. आप बोमेन हो अच्छा No problem. Don't आपको भी blink पसंद है वो though, or you might कैरेक्टर miss it. पता नहीं लोग पता नहीं हेट करते हैं वो कैरेक्टर्स को वो यार फाइटिंग करनी थी इसके साथ क्या एक ग्लाइडिंग कंपटीशन दे दिया I could get used to this.
बोथ माय अकाउंट्स आर बोमेन, क्या बात है। साउंड को क्या हो गया? Well, I have the अच्छा goods. Here you go. So how'd I do? Pretty well, I'd say. Brother, what do we do? This fellow isn't normal. Please, hold on a moment, sir. We need to discuss something amongst ourselves. मास्क लगा रखे He इन्होंने ain't here for एटलीस्ट। an initiation. He just wanted to show off. सोशल Honestly, डिस्टेंसिंग। we'd be no match for him if he wanted to fight. Guys, do you think that maybe we're being robbed? I don't know. Surely he wouldn't have come here all dressed up like that if he was only after us. Unless maybe his words have hidden meaning. Snezhnaya, 3 months, 600,000. Oh, I get it. It was insider talk. I remember that the boss took out a 600,000 more alone from that Snezhnayan bank about 3 months ago, and still hasn't repaid it. So this guy must be the debt collector. But why didn't he just say so? What's with all the toy talk? And that's where you're still green. See, in a lot of professions like this, people speak in code to protect the privacy of their business partners and clients. Makes sense. Owing money is pretty embarrassing. This guy isn't one to mess with, I tell you. He's a professional. Way too professional. So, Mr. Salesman, my apologies, but we can't have you joining us. Oh? I didn't pass? I must say, I never imagined that the treasure hoarders would have such strict entry requirements. No, it's not that. What we mean is that you're too big a fish for our little pond. But we fully understand the situation with the, toys, sir. We'll fetch that 600,000 for you right away. I see. Well then, it's been a pleasure doing business with you. We get paid, and everyone stays happy. A wonderful outcome, wouldn't you say? Yes. Couldn't agree more, sir. That's my brother for you. Toy sellers are so cool. हाउ मच सेव्ड चेक करना पड़ेगा, मेरे ख्याल से 3200 4000 समथिंग 4300 हो चुके हैं प्रीमो जेम्स इस अकाउंट में। तो ऑलरेडी है मेन टीम वेंटी फिश एम्बर, अरे सारे के सारे वो करेक्टर्स, क्या बात है। इसके अंदर 4300 हो गए हैं, नॉट बैड एक्चुअली, राइट? बट फिर भी कमी है, इतने ज़्यादा विशेष नहीं है। जिसमें मैंने अल्बेडो बैनर के एंड तक बिल्कुल विशेष करी और एक प्रीमो जेम तक भी सेव नहीं किया था। Ah, Master Childe, you're here. A new batch of fresh recruits have just... Hey now, keep your voice down. Can't you see I'm entertaining some clients over here? Clients? Well, anyway, the Motherland has dispatched a new batch of recruits to Liyue. They've just arrived, and I'm afraid we must trouble you to speak to them. Do I have to? Now is hardly the best time. I must apologize for troubling you, Master Childe, but they are already waiting for you south of Lingju Pass. Every new batch of recruits must be baptized by the Tsaritsa's will, through the words of her harbingers. This has always been our rule. At present, Master Childe, you are the only harbinger in Liyue. Please, everyone is standing in formation and waiting for you to bestow this honor upon them. Well, all right then, I'll go. Just give me a moment to catch up with my brother, and I'll be right with you. Do you have to keep working? Yes, Tusser. We have a group of new toy sellers fresh in from the motherland, and I need to go teach them the ropes. Wow, that's great! When I grow up, I want to be a toy seller too. Can I go listen? I'm afraid you're still too young, Tusser. I'm not sure if you'd understand much of it, and most of it's rather boring anyhow. Why don't you go play with the Traveler instead? Sound good? 4.8 के प्रीमो मेरे भी ऑलमोस्ट इतने होने वाले हैं। 5 वेट्स वो शॉप से रिसेट में मिल जाएंगे। 13 टू पीटी 33 में मेरे, बट 50-50 चांस, सेम 50-50 चांस। और शाओ के सारे मटेरियल्स फार्म कर लिए हैं, मटेरियल से एक भी फार्म नहीं किया मैंने गानियों के लिए। बट आप शाओ की बात करें, मैं गानियों की 4.3 प्रीमो हो चुके हैं, 5 वेट्स हो जाएंगे शॉप से। इसके अलावा स्टैंडर्ड बैनर पे 10 विशेस हो जाएगी, ऑलमोस्ट 8 या 9 हो चुकी है ऑलरेडी।
और 33 पीटी पे हूँ और 50-50 चांस है, देखते हैं 1 तारीख को गानी मिलती है कि नहीं। सिमिलर कंडीशंस है काफ़ी, सेम नहीं सिमिलर। I really do have to go now, too, sir. A lot of people are waiting to see me. I'll see you around, all right? Childe really dotes on his brother, but now he's gotta ditch him again. Must be a really tough job. I think that covering it up is the tough part. Yeah, you're right. He hasn't done himself any favors with the whole toy seller cover story. To think he'd go this far just to prevent his family from seeing his dark side. He's being a bit overprotective. I wonder how much longer he can hide it from Tuser. Maybe. But he has good intentions, doesn't he? Wait. Where's Tuser? गया वो तो? We were too busy chatting. Where'd he go? At a guess, he probably snuck off to follow his brother. Seems likely. Tuser did seem really eager to hear his brother's speech. Either way, let's head over there first. Tuser. What? Can I fly there? Or should I just walk? I can fly from here, I think. हाथ को ऐसे फैलाने की क्या जरूरत है जब इनके पास पंख है? मे बी पोस्चर के लिए। तुषार Don't you ever run off like that again, young man. Shh, quiet! My brother's giving his speech. No respect. To straight the glider. From this day forward, you will honor the oaths you have made to Her Majesty the Tsaritsa, and you will stop at nothing to bring Snezhnaya victory. You shall sweep through this land like the icy winds of the furthest north, as strong as the hoarfrost of Zepelyarny Palace. You will chill the very marrow in our enemies' bones. Her Majesty expects of you loyalty, ruthlessness, and meticulousness. For the trials that we face are harsh, and our enemies are like... like kites and rattle drums, who shall become redoubtable foes of Mr. Cyclops in the marketplaces of Liyue. Uh-huh. Kites are really fun, too. This is, of course, an analogy. As they say, the marketplace, too, is a battlefield. So as your sales manager here in Liyue, I demand that you obey my every order. A refusal shall be considered a betrayal, and the price for betrayal is to be dishonorably discharged from... from the Liyue Institute of Toy Research. Whoa, that's really strict. Won't people be really sad if they get fired from the Institute? Huh? क्या बात है? Seeking to please everyone pleases no one at all. Time to try something else. Forget it. Perhaps a round of hands-on training will suit us better. Hands-on training? After all,
A strong body is the proof of one's capacity. Hey, क्या पता ग्लाइडर हाथ के ऊपर ही लगा होता did हो. he just say that we're doing hands-on training? A Harbinger wants to spar with us personally? What an honor! I can't believe it. Are recruits like us really worthy? Am I hearing a hint of objection to this idea? Not at all, sir! That's the spirit. Now come at me, you lot. वही फाइट. Frostbite. ओ भाई कैसे काटता है ये. Coming to be. Animal test 62% clear. Absorption test. Need to make. Wait, what the hell? Faster. Okay, faster. Witness my great undertaking. Coming to be. Need to make adjustments. Title is brace yourself. This is gonna hurt. Live. Coming to be. Hurry up! This one's No time to lose. an unfortunate fault. ब्रो पांचवा बटन दबाया नहीं जाता. Sacred name. Fortune preserver. डीलुक्स से कितनी जल्दी मर जाता वैसे. ओह अच्छा ये ना बात. Shouldn't let your guard down. Let's move. कहाँ गया वो. Burst forth. Moment of birth. Life goes on. Roasted fruit. Don't be a killjoy. We've only just begun. This is well done. Coming to be. Oh, you got it. This one's well क्या बात. Well then, do you all understand थोड़ा what I टाइम said लगा मेरे को earlier? सेटिंग आने में बट हो गया था. Excellent. And you all almost managed to get me limbered up. In other words, you've done well for new recruits. Thank you, Lord Harbinger. All right, hush now. Now then, I wish you all glorious victory for Snezhnaya, for Her Majesty the Tsaritsa, and for yourselves. Dismissed! Brother, you were amazing. Oh, Tusser, what in the world are you doing here? Alone he is not good. हाँ. There I was thinking that मेरा a focus mostly traveler इसके had ऊपर ही taken था you to एकदम play से. at Wang Shuin. Yikes. तो इसका कूल डाउन बहुत लंबा है ना. Terrible acting. इसके साथ मतलब चाहिए होते हैं वो चीजें. बट जब डैमेज करता है तब बहुत तगड़ी करता है. I told you, didn't I? I never pass on an opportunity to improve my strength.
I'm not the man I was when we first met. You didn't go all out though. You must mean my foul legacy transformation. It puts a great strain on my body, so it's best saved for crucial moments. I still haven't fully recovered from the injuries I suffered when I used it at the Golden House. Anyway, I'm no senora. I don't use lethal force against recruits. Come on now. The foul legacy transformation? Does it make you stronger than Mr. Cyclops? You could say that. Ozzy is the best partner for him. Too. I want to be cool like you. Now, too, sir, fighting isn't about looking cool. You can only continue to get stronger if you know the reason why you're fighting. I can teach you, but think carefully first. Why do you want to fight? I want to protect Sister Tonya. That's a good answer, too, sir. When I return to Snezhnaya, I will start teaching you fighting techniques. Then you'll have to protect Tonya for me. How does that sound? Leave it to me. You know, Tooser's a good kid when he's not being so stubborn. You've had a nice long time here in Liyue, haven't you, Tooser? Isn't it about time that you took the boat back home? But you've been so busy, and we didn't get any time to play together yet. Tooser, you know I'm very busy at work. And hasn't it been fun traveling all over the place with a proper traveler? He's just worried he won't be able to keep up the toy seller act forever. Well, how about this? If you just do one little thing for me, I'll be a good boy and go back home. Oh dear, who taught this little devil to bargain? All right, what'll it be? Take me to visit the Institute of Toy Research. Do you think he means that ruin that the Millilith was talking about? The one where all the ruin guards were coming from? A risky wish, a reasonable wish. Done deal. After all, you've come all this way for me, Tooser. As your brother, it's only right for me to grant you one last wish before you leave. Exactly. Are you sure this is a good idea? It doesn't seem like the best place for kids. You should come along too, Traveler. This time, it's Tooser's turn to take you sightseeing. Let me think. Ah, yes, the Institute of Toy Research is not far at all from Lingju Pass. Now, Traveler, you're not the sort of person who would disappoint a kid now, are you? Yes, I am. The brothers are ganging up on us again. Oh, fine. We'll go. ये क्यों डिसाइड कर रही है मेरी जगह? ओह, एडवेंचर 41, नाइस. 41 हिट कर गया हूँ मैं. ओह 4500 जो है एक्चुअली. एंड 9 एक करैक्टर को सेंड करूंगा मैं, शायद से एक चीची को सेंड करूंगा जल्दी ही. तो जल्दी हो जाने वाले हैं ये. इससे याद आया मुझे पहले ना ये बाय कर लेनी चाहिए. एटलीस्ट बाय तो कर लेनी चाहिए वहाँ से शॉप से. फ्लावर्स. ये इसको मार रही है. गायब हो गए दोनों. $26 minutes. वेट, अच्छा ये आइटम, हर एक आइटम का अलग अलग है. ये 1 day 26 minutes है.
वो मार नहीं रही थी उस बच्चे को, दवाई नहीं पीनी। अच्छा, आपको क्या सबकी बैक स्टोरी पता है? कमाल ही है यार। दवाई नहीं पी रही तभी तो मार पिटाई हो रही है उसकी। हील सुक्रो। कमीशन में था वो? अच्छा, मेरे पास तो नहीं आया अभी तक ऐसा कमीशन। मुझे लगा आपने सभी से डायलॉग करे हैं इसलिए आपको सबके डायलॉग पता है। Coming to be. Mr. Cyclops. Burst forth. Animal test 6308. Retribution. Live. Witness my great undertaking. Retribution. फिर उसको आलमंड टोफू देना पड़ता है शायद। किसको? अच्छा, उस लड़की को जो मार रही थी, जो मार खा रही थी। आई नीड टू वर्क ऑन माई हिंदी अलॉट। माइनिंग के वक्त जंगली याद आता है होगी आपको बहुत। हाँ, एक सेकंड में किया होल्डर हो गया। Here we are. Welcome to Liyue's Institute of Toy Research. Yeah, we're here! I can already hear the sounds of machinery inside. Awesome! What is this place? And how do you know about it? Based on my limited understanding, I believe this is one of Dottoro's research facilities. Dottore is another one of the Fatui Harbingers. He loves tinkering with old things. It's a personal passion of his. So, he converted these ruins into a Ruin Guard research lab. Huh? So the ruin guards are built by the Fatui? No, they have much closer connections to the Abyss. So, strictly speaking, they're as much our enemies as anyone else's. We just do research, nothing more. As to why the Ruin Guards have been moving outside of this area recently, I can only imagine that he's gotten bored of playing around with them and has lost interest in this place. Wow, yet another Harbinger with a bad attitude. But at least this explains why you were totally okay with bringing Tooser here. Seems you did your homework ahead of time. Well, I wouldn't go quite that far. I actually have no idea what this place is like on the inside. Wait, so are you or are you not worried about your brother's safety? पागल है Of भी। course I am. But no matter what the danger is, I will parry it. Isn't that what any older brother would do? हाँ, वो पीछे से Even चला जा Tooster चुका है understands अंदर। that, now that he knows what he's fighting for. It's the very same reason that's been nestled in my own heart for so many years. What are you guys chatting about? डॉटरी, Come हाँ, on, let's go in! डोटोरी, All right, डोटोरी। follow me. एक और हार्बिंजर का नाम लिया है स्टोरी के अंदर है। एंटर द इंस्टीट्यूट ऑफ टॉय रिसर्च लिखा हुआ था। सीरियसली, द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ मिस्टर साइक्लोप्स, इंस्टीट्यूट ऑफ टॉय रिसर्च। वाटर चाहिए। चाइल्ड होगा मेरी टीम में, क्या दिक्कत है? नहीं,
मांगा में है वो ट्यूटोरियल। अच्छा Brother, someone was saying that Mr. Cyclops is a killing machine. Were they now? What a silly thing for them to say. And you shouldn't go repeating it either, Tooser. You're far too young to be talking about such violent topics. Yeah, I knew that they were lying anyways. Mr. Cyclops is here to defeat the bad guys and protect the world. He's my favorite toy. ये बात बोलना जरूरी है इसको। With Mr. Cyclops around, टॉय रिसर्च सब bad कुछ सही है guys बट won't ever get you. साइक्लोप्स का बोलने का जरूरी है और कोई टॉय दे दे। Okay, I'm going to go play with Mr. Cyclops now. खुद इसको डेंजर में डाल रहा है। Wait up. ले बंद हो गया। The door's shut. Will Tooser be all right? No. There's another path over there. Let's move. है तो बेवकूफी एक नंबर का चाइल्ड। पानी में वर्क नहीं कर गया। No time to lose. Oh, the door opened. मेरा गेम बग हो गया था इस स्टोरी में। अच्छा But give me a moment over here, Tooser. I need to make sure that कैसे? everything's safe. Maybe I shouldn't have spoiled him quite so much. आप स्टक हो गए थे इस मिशन में। No time to lose. No time to lose. Those ruin guards have all been strung up. Where are they being taken to? I don't know, but if there's a chance it's where Tooser is, we need to stop this before things get ugly. Feel this ancient power. Couldn't let your guard down. You must have cheated with Venti. पक्की बात है। बस काम करो चाइल्ड को ना अपनी इक्विप मत करके रखो ई के साथ एटलीस्ट चेंज कर लो ताकि उसका रीसेट होना शुरू हो जाए आपकी आती। Tooser, see that big stone cube in front of you? I need your help. Yay! Do I really get to help my big brother out? You सीधा bet. गेम रिकनेक्ट Now आ I'll रहा था। count down from 3, and then we touch it together. Ready? 3, 2, 1. ओ भाई वो चेस्ट चाहिए मुझे। That's bright. What is that?
It's a witch ray that will turn you into a little lamb if it hits you. So stay out of its way. That's scary. ओ भाई बच गया। बस Back together at last. You're not hurt, are you, Tooser? Hurt? No way. This was really fun. Fun for you, maybe. We were all scared to death. What's over there? Wow, this room is huge. इसके अंदर कटसीन आने वाला है, मैं भूल ही गया था। बहुत बढ़िया वाला है, मजा आएंगे देख के। लाइक गोल कंप्लीट होने वाला है गाइस। Now, how about a little game of hide and seek? Huh? Hide and seek? I have a surprise for you, you know. A surprise? Oh, what sort of surprise? Don't worry, you'll have the chance to look for it later. But Thanks before to that, maintain catching, I didn't wait for Ruin Guard. Turn around. मैं कोशिश करता तो अल्बेडो का यही से कर सकता था, बट ज़्यादा टाइम लगता मुझे। Really long time though. नॉर्मल ज़्यादा वेटिंग थी नहीं। There's not much time. Let's clear all these hazards out. अरे यार। 47, 46, 45. Are you guys okay? What's all that crashing and banging? Don't worry, it's all part of the surprise. ब्रो एक और है। No cheating! You skipped a few numbers, you little rascal. You noticed. Alright. 15, नहीं 13. नहीं हो पाएगा। वेट Give me another 10 seconds, Tooser. Still hiding. मस्ती आने वाली। Now who's the cheater? Alright, 10 seconds, that's it. 10, 9. क्या बात है? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Coming, ready or not? ये कटसीन बग हो गया था। It's 1 AM. Sleep. No, I don't sleep. Sleep is for weakling. Ash Black Dragon, welcome back. आपको बहुत प्रॉब्लम होती है मेरी स्ट्रीमिंग से, है? मजाक कर रहा हूँ, मतलब प्रॉब्लम नहीं, आपको मेरी हेल्थ की बहुत चिंता होती है, ये बोलना चाहता हूँ मैं एक्चुअली। करना तो यार एंजॉय, काम है मेरा वैसे भी ये। This is the surprise your brother prepared for you. Wow, he actually pulled it off. And the way he knocked those ruin guards around was like they really were kids' toys. All my cutscenes are bugged. Wonders if he'll be all right after using the यहाँ enjoy कर Cloud सकते हो। Legacy transformation again. Awesome! मेरे तो कटसीन में प्रॉब्लम नहीं है आज तक। Boy, if these Mr. Cyclopses weren't so big, I'd sure love to take one home. हेल्थ इज एवरीथिंग। आराम से बैठा हूँ ब्रो, एंजॉय कर रहा हूँ। हेल्थ में क्या प्रॉब्लम आएगी आप बताओ। Where'd he go? Where'd my brother go? जब मैं आराम से बैठा एंजॉय कर रहा हूँ तो हेल्थ की क्या प्रॉब्लम है? Oh, that's right. I was so excited that I forgot all about our game.
Well, let's go look for him together, okay? Sure. Wait. कहाँ गया? अच्छा वो रहा गेट. It's a good thing that you two found me first. Looks like using the foul legacy transformation while I was still injured took more out of me than I thought. I have no idea what I'd do if Tooser saw me like this. आज वाला देखा था डिलुक वाला Deflated कट as सीन a मस्त है burst ना. balloon. I haven't seen any other than in MG stream. अच्छा. Lol how मतलब how क्या? I'm not afraid that I might and you right here. As I recall, you have siblings too, yes? I figured that you probably wouldn't take me out in front of my little brother. Really milking this situation, huh? Like I said, I can never pass on an opportunity to test my limits. And that's why I, Tartaglia, am always getting stronger. Anyway, childhood dreams are all too easily shattered. Even if you just leave them be, they will fall to pieces all by themselves. So someone has to protect them, right? If you make a promise, you keep it. If you make a mistake, you apologize. And if you give someone a dream, you defend it to the end. That is what family is all about, isn't it? मुंह देखो अजीब सा गोल गोल सा नहीं लग रहा है इसका अजीब सा. ध्यान से देखो बहुत कार्टून जैसे लग रहा है हागी मारू टाइप. गोल गोल अजीब सा. अब ठीक लग रहा है. Remind you of something, did I? I just hear sound, nothing comes up, the scene hangs at a frame. अच्छा. See a doctor right away, mister. A fine suggestion, but first, I have a little something for Tooser. You will Please give it get to him on my here behalf. every day, be safe. Is this Sit on a chair every day, you eat. action figure? Indeed. I had made it to order by a smith some Okay. time back. I had मेरे को intended आदत है to give bro. it to him on my return to Snezhnaya. But it और seems मैं that it would make a better सुबह सुबह souvenir वॉक at पे this जाता हूँ, मॉर्निंग वॉक करके आता हूँ. Now that Paimon thinks about it, Childe's family are really lucky to have him, aren't they? सुबह मतलब ज्यादा सुबह नहीं, I'll बट also धूप need you निकलने to पे explain my abrupt departure to गार्डन में Tooser. वॉक करके आता हूँ. You'll help 2-3 me out, चक्कर, won't 5 you? चक्कर जितने भी हैं. फैट नॉट ईयर. आपका फैट ऑटोकरेक्ट हो गया, ईयर कैसे हो गया मुझे ये समझाओ. बाकी सब ठीक है, बाकी सब ओके, बट फैट ऑटोकरेक्ट हो गया, ईयर कैसे हो गया ये समझाओ मुझे बस. फ्रेम फ्रीज. अच्छा मोबाइल में होता होगा, आप सब मोबाइल में खेलते हो क्या? पीसी में कैसे होता है? मेरे लैपटॉप में भी नहीं हुआ था ये सब. तो आप रेंडरिंग की क्वालिटी को कम कर दो अगर ये सब होता है तो. फ्रेम्स कम है तो आपके. यू मेक अ प्रिंट प्रोमिस, यू कीप इट ऑल योर लाइफ. यूट्यूब इज स्टूपिड समटाइम. यूट्यूब या आपका कीबोर्ड ऑटो करेक्ट. यूट्यूब का क्या गलती है इसमें? दैट्स हाई लेवल ऑटो करेक्ट. हाँ. You make a pinky promise, you keep it all your life. I make a pinky promise, I get thrown on the ice. The cold will kill the pinky that once betrayed your friend. The frost will freeze your tongue off so you never lie again. Ah, that nursery rhyme brings back so many delightful memories. I mean keyboard. Tooser taught you that one, did he? कभी YouTube, कभी कीबोर्ड, कभी फैट को ईयर. क्या भाई, कोई बात नहीं, होता है. मेरे साथ भी बहुत बार होता है. आपको नींद आ रही है मुझे पता है. All right. Thank you. ओ भाई अटक गए. बच गया.
रुक लिटिल श्रिम्प, रुक जा। I can't find him anywhere. Where did he go? What? Why? Why would he leave without me? A huge number of people suddenly wanted Mr. Yeah, so he had to leave in a real hurry. He didn't abandon you here on purpose. Oh, well, that's great. But still, I was kind of hoping we could play here a little longer. This is for you. Mr. Cycle will kill you company this time. Wow, look at this! I never knew that they made Mr. Cyclopses in this size. Look, it even has my name on it. It's my very own Mr. Cyclops. You're really loving it, huh? You bet. My brother is the best big brother ever. You had a tour of Liyue, you met your brother, visited the Institute of Toy Research, and got yourself a souvenir. Now that's what we tour guides call the perfect trip. Do you think you're ready to head back to Snezhnaya now? Don't worry. I know I can't get my way all the time. That'd just be annoying for everyone else. Oh, अच्छा। So, let's go. समझदार हो गया बच्चा। $50 लाइक्स हो गए। यस, आज लेट लगता सोने का नहीं है, सोने का मन नहीं है। मैं ब्रो डेली 4 बजे सोता हूँ। कल वीडियो पता है कितनी देर तक रिकॉर्डिंग कर रहा था मैं। वीडियो की लगता है आपको 12 मिनट की वीडियो है, बट उसके अंदर 2 घंटे लग जाते हैं। उसको रेंडर करना, उसकी एडिटिंग करना, उसके अंदर कट्स लगाना, उसके लिए पहले वीडियो बनाने से पहले मेरे को टॉक पॉइंट्स बनाने पड़ते हैं। आधा घंटे से तो ऊपर उसमें लग जाता है कि मेरे को बोलना क्या है ताकि वीडियो में लंबी ना खींच जाए वीडियो। उसके अलावा उसके बाद उसके थंबनेल, उसके टैग्स, उसका टाइटल, उसका डिस्क्रिप्शन, सब कुछ लिखना, फिर उसको शेड्यूल करना, और फिर सुबह उठने के बाद जब शेड्यूल का रखा है उसको, उसके बाद उसको प्रमोट करना जगह जगह पे। काम बहुत होता है एक वीडियो में। लाइव स्ट्रीम में तो क्या, लाइव गए, खेले और बंद किया, खत्म। लाइक कॉल अपडेट करेगा कोई? मुझे लगता नहीं कोई करने वाला। तुषार आप लिख सकते हो क्या लाइक कॉल? थैंक यू ब्रो। 60 लाइक कॉल चलेगा इस टाइम के हिसाब से, तो काफ़ी ठीक है। और आपको पॉइंट्स भी दे देते हैं। कितने देने हैं? 1000। लो डन। Ma'am, Slots young all. Master Tooser. I've been waiting for you. Did Childe send you? That's correct. Master Childe instructed me to arrange for young Master Tooser's return trip. Please, come this way. Who are you? My big brother always tells me never to go off with strangers. But you've been following us around this whole time. Yeah, that's because I've known who you are all along. What? My brother told us all about you in a letter he sent back home. Sister Tonya read it to me. I actually recognized you the moment I saw you. I just couldn't remember your name. What a strange twist of fate. ये मैं पहले से जानता था। What the hell? MJ, you need at least 1000 subs in order to start getting money on YouTube, right? हाँ ब्रो, इसके लिए मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो रही है। 1000 सब्सक्राइबर्स मेरा है क्योंकि 5000 वॉच ओवर्स हो चुका है। 4000 की जरूरत होती है, 5000 हो चुका है। वॉच ओवर्स की दिक्कत नहीं है, सब्सक्राइबर्स पता नहीं धीरे धीरे है बहुत ज़्यादा। कुछ हेल्प हो सकती है तो देखो इस चीज़ में, शेयरिंग करो अपने फ्रेंड्स के साथ या कुछ और तरीका।
First time I see child, the only thing comes to my mind is the chest inside the bank. मेरे भी आता है हर बार इस एरिया में आता हूँ जो मैं 20,000 प्रीमोजेम्स ओ प्रीमोजेम्स कह रहा हूँ ओ भाई 200,000 मोरा. It was a pleasure meeting you too, true sir. Your brother didn't say anything bad about me, did he? Not at all. In fact, he said that if he ever had the chance, he'd quit his job and join you on your adventures. Young Master Tusser, the boat to Snezhnaya will dock soon. We'd best prepare for boarding. Gee, time really flies when you're having fun. Well then, see you, Miss Nice Lady. I'll wait for you back home. You definitely have to come visit Snezhnaya sometime. We have a deal. Wanna make a pinky promise? Yeah! Pinky promise, pinky promise! You make a pinky promise, You keep it all your life. You break a pinky promise. Paimon throws you on the ice. The cold will kill the pinky. The once betrayed your friend. The frost will freeze your tongue off. You never lie again. Must. It's a promise then. Bye-bye, Tooser. Have a safe trip. तो स्नेज़नाया जब जाएंगे तब प्रूसर से मिलेंगे वापस. Money, 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 money. Hi, hi. 90 primo. Hey. Child? So you were here this whole time? What are you hiding for? Why didn't you come and say goodbye? Bye. Partings are special moments. If he spent his final moments in Liyue seeing me all haggard and weak like this, that's not a memory I want him to leave with. Still, it is a shame that I couldn't see him off by myself. I should have been the one taking him back. I do have subordinates to escort him, but I still feel a little uneasy. Jeez, don't you think you've spoiled him enough already? I can't quite explain it, but somehow I felt much more at ease leaving him in your care. And to think that not long ago we... Ah, yes, I almost forgot. Remuneration for your services, which I really couldn't have done without this time. Aha! So you do have a heart after all. One other thing. Don't forget our promise now. Let's have a rematch when we get the chance. This time, with my honor as a harbinger on the line. Like goal 70, 60 like goal done. Paimon 2.0 क्या हो रहा है यार ये? पहले बता देते मैं like goal 70 डलवा देता पहले. भाई 60 लाइक्स हो गए. रुको यार, बच्चे की जान लोगे? 100,000 दूंगा. 1000 पॉइंट्स बहुत होते हैं. 600 पॉइंट्स बनते हैं 60 लाइक्स के. वो तो 40-50 के इकट्ठे थे इसलिए 1000 दिए थे. 70 पे नहीं मिलेंगे थे. नहीं चलो मिल जाएंगे. रात की स्ट्रीम है, सपोर्ट अच्छा हो रहा है, मिल जाएंगे. ऐसी क्या बात. लाइक गोल अपडेट हो गया है. थैंक यू पाइमोन फॉर द 61 लाइक्स एंड एवरीवन जिसने भी लाइक किया सबको थैंक यू सो मच. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. आई एम नॉट गोना लूज टू यू. You best go rest up first. Don't come crying to us when you lose all over again. Regardless of who wins or loses our next bout, I'd also like to invite you over to my home. I'll introduce you to my other siblings, Tonya and Anthon. They're great kids, and I'm very proud of them both. We'll take you up on that offer. Mostly because we already made a pinky promise to Tooser. I'm sure that he'll be very excited to see you too. Well, that settles it. I'm looking forward to it. Now, farewell, my friends. Till we meet again in Snezhnaya. Act 1 complete. इसका Act 2 मेरे ख्याल से फिर से आएगा स्नेज़नाया में. 60 प्रीमोज और मिल गए. 200 प्रीमोज और मिल गए. मनी 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 मनी. ओ 5000 नहीं हुआ हिट. 350 मिले अभी रिसेंटली मुझे. हाँ 4,500 थे. ठीक है ठीक है ठीक है.
Welcome to the Northland Bank. रुग्वेद रदकर कैसे हो ब्रो? वेलकम। क्या हुआ? प्रीमोजेंस मिल रहे हैं इसलिए? अभी 90 मिले मुझे उससे, वॉकिंग मून से, ब्रेसिंग मून से, 60 मुझे इवेंट स्टोरी क्वेस्ट से, और 200 मुझे डेली लॉगिन से। नाइस। ये तो नहीं मिलने वाली, मुझे लगता नहीं है, नहीं मिलेगा। ये वन टाइम है। डेढ़ बज गया गाइस, 1:30 बज गई है, बहुत देर हो रही है भाई। मतलब ओ भाई, मुझे लगा फर्स्ट पर्सन व्यू है। कमीशंस कर लें? कल नहीं करने पड़ेंगे। 60 प्रीमोज यहाँ से मिल जाएंगे। किस चीज़ में देर हो रही है? रात हो रही है इसलिए? लेट एट नाइट आई मीन। सो ब्रो, कैसे हो सकता है कि 1:30 बजे आप लोगों मतलब आजकल की जनरेशन 3 बजे तक नहीं सोती है? मुझे लगा आजकल की जनरेशन मोस्टली 3 बजे सोती है। बैंड गाय जीटी कैसे हो ब्रो? इज देयर एन डिस्को सर्वर आई कुड ज्वाइन फॉर जेंशन? यस, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर सकते हैं। स्ट्रीम लैब्स ने रिपोस्ट किया हुआ, थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो ये रहा। थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे ना, लगभग 15-20 मैसेज ऊपर, तो स्ट्रीम लैब्स ने भी चैट के अंदर डिस्कॉर्ड का लिंक जो डाला हुआ है। उसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। वेलकम ब्रो, वेलकम। कैसे हो? तो स्टोरी क्वेस्ट तो ख़त्म हो गया है, स्टोरी क्वेस्ट और नहीं करेंगे अभी। ब्रिलियंट डायमंड। मेरा दोस्त 9:30 बजे सो जाता। ब्रो मेरी तो बहुत बुरी आदत थी, अभी भी है। बुरी तो क्या ही है ब्रो, रात का मतलब ज़्यादा आउटपुट निकलता है। 70 लाइक 10 पॉइंट्स दूँ, 500 पॉइंट्स मिलेंगे। चलो 1000 पॉइंट देते हैं, रात को सपोर्ट मिल रहा है यार। रात को इतना अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, वो भी बहुत इनफ है। आप खुश 70 लाइक्स पे भी 1000 पॉइंट्स और बोलो। सिंस व्हेन हैव यू बिन प्लेइंग जेंशन? मैं 3 महीने से डेली लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ। रात को नहीं करता हूँ, मैं दिन में करता हूँ डेली। आज रात का स्पेशल ओकेजन था बस। थैंक यू तुषार लाइक गोल अपडेट करने के लिए। बट मैं 3 महीने से डेली जेंशन की स्ट्रीम कर रहा हूँ। मुझे जितना आ रहा है नवंबर दिसंबर जनवरी तो पूरा किया ही है। अक्टूबर में भी काफ़ी देर से काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ अक्टूबर में। तो मोर देन 3 मंथ्स हो गए इस गेम को खेलते हुए। और बस और तो क्या। और ये जो कम्युनिटी बनी है मेरी, मोस्टली जब मैंने जेंशन खेलना शुरू किया था तब मेरे ख्याल से 250 के अराउंड सब्स थे शायद, और तब से 700 तक पहुँचा हूँ मैं। यू मिस द वेंटी बैनर? नहीं, एक्चुअली मैं उससे वेंटी बैनर था जब मैं खेल रहा था। जस्ट वेंटी बैनर एक हफ्ता था, मतलब वेंटी बैनर एक हफ्ता पेंडिंग था जब मैंने खेलना शुरू किया था। क्ली का बैनर आया एक हफ्ते बाद आया था। जिस दिन मैंने खेलना शुरू किया था उसके एक हफ्ते बाद क्ली का बैनर आया था। मुझे लगा हर हफ्ते नए बैनर आते होंगे उस टाइम, क्योंकि मैं पहले ये गोचा गेम्स खेल चुका हूँ 1-2, बट मुझे वेंटी मिला नहीं था। और ये वाला अकाउंट सेकंड है, मैं फर्स्ट अकाउंट अलग है। मेरा 52 AR रैंक वाला एक और अकाउंट है, ये दूसरा अकाउंट है। 2 अकाउंट खेलता हूँ। ओमेगा सैम गेमिंग कैसे? फेवरेट गेम कौन सा है? अभी ऑल टाइम फेवरेट अभी मेरा है डिट्रॉइट बिकम ह्यूमन। पाइमोन गुड नाइट ब्रो। ओके, एक जोंगली का और एक गान्यू का स्टोरी क्वेस्ट पेंडिंग है। उसके अलावा मैं चीन का स्टोरी क्वेस्ट अनलॉक कर सकता हूँ कल। एक रात में 2 स्टोरी क्वेस्ट हो सकते हैं, तो ये 2 स्टोरी क्वेस्ट हो जाएंगे। फिर कोशिश करेंगे एक रात में 3 कर लेंगे, या बीच में एक दिन कर लेंगे, या कल एक स्टोरी क्वेस्ट कर लेंगे स्ट्रीम
बाय द वे कल गाइस फिर से रिमाइंड करना चाहता हूँ मैं आप लोगों को, कल की स्ट्रीम मेरी लॉन्ग जाएगी, 2 बजे से शुरू करूँगा दिन में, 2 या ढाई बजे से, और रात तक होएगी 12 बजे तक, 1 बजे तक, जब तक मन करेगा। कल काफ़ी लंबी स्ट्रीम होने वाली है। मोस्टली मेरी स्ट्रीम होती है 2 से लेके 8 तक डेली, बट कल 2 लाइव स्ट्रीम का रिएक्शन करना है, एक चाइनीज़ वाली, एक इंग्लिश वाली 1.3 अपडेट के लिए। तो कल लंबी लाइव स्ट्रीम जाएगी। तो रात को 9:30 बजे होने वाली थी इंग्लिश वाली लाइव स्ट्रीम, तो इतना जल्दी आने से अच्छा मैं कंटिन्यू ही रख लूँगा। स्टोरी गेम पसंद है यार कोई और? स्टोरी गेम, हाँ मेरे को स्टोरी गेम्स बहुत पसंद है। कोई और गेम बताऊँ इसके अलावा? मेरे को लाइफ इज स्ट्रेंज बहुत पसंद है, रेजिडेंट इविल सीरीज बहुत पसंद है। प्रिंस ऑफ पर्शिया ओल्ड टाइम की पसंद थी, बट अब काफ़ी पुराने टाइम से नहीं आई है, तो रीमेक आने वाला है उसके लिए एक्साइटेड हूँ। लिटिल नाइटमेयर्स पसंद है, जो कि वो भी आने वाला है फैब में, सेकेंड पार्ट उसका। तो कल हम मेरे ख्याल से रात को जब सेकंड लाइव स्ट्रीम ख़त्म हो जाएगी उसके बाद शायद एक स्टोरी क्वेस्ट कर लें। सुबह ड्यूटी जाना है, ओके ब्रो, गुड नाइट। तो अभी क्या करें? या तो कमीशंस कर सकता हूँ मैं। रेजिडेंट इविल 4 खेला है, हाँ 2 बार। अपने चैनल पे मैंने 2 बार खेला है। 3 साल पहले मैंने, सबसे पहली गेम मेरी गेम चैनल पे यही थी, रेजिडेंट इविल 4, जिसका फुल प्ले थ्रू डाला हुआ है मैंने। उस टाइम की क्वालिटी कम थी, अच्छी नहीं थी। उसके बाद मैंने अक्टूबर के अराउंड एक बार रेजिडेंट इविल 4 का लाइव स्ट्रीम किया था, हाँ अक्टूबर में। तो उसका भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको, आई थिंक। प्लेलिस्ट में नहीं होगा तो वो शायद नहीं है प्लेलिस्ट में, आपको चैनल पर सर्च करना पड़ेगा। अक्टूबर में किया था मैंने उसका लाइव स्ट्रीम। फिर रेजिडेंट इविल 7 का किया था, 2 रीमेक का किया था, 3 रीमेक का किया था, और अब रिसेंटली फिर से किया मैंने जनवरी में। बट 4 का नहीं किया मैंने, सीधा मैंने 2 का करा, फिर 3 का करा, फिर 7 का करा। अब 2 रीमेक का फिर से करने वाला हूँ कुछ दिनों में, बट उससे पहले मीडियम खेलेंगे हम। देखते हैं उससे पहले खेलेंगे, उसके बीच में वो उसको कर दे, क्योंकि मीडियम 28 तारीख को रिलीज होने वाला है। उसके बीच में ही हो जाएगा मेरे ख्याल से रेजिडेंट इविल की स्ट्रीम, 2 दिन के अंदर हो जाएगा रेजिडेंट इविल 2 का क्लियर वाला वॉक थ्रू, क्योंकि लियोन का कर चुका हूँ। मुझे इसकी फार्मिंग करनी थी, बट सैटरडे को होगी ना, और उसके अलावा मुझे इसकी फार्मिंग करनी थी, ये आज हो जाएगी, बट ये कल की स्ट्रीम में करेंगे ऑब्वियसली ये वाला पार्ट। मैं सिर्फ और सिर्फ अब कमीशंस कर सकता हूँ चाहो तो। सक्षम भाई कैसे हो? हाँ मैं फिर से अभी भी लाइव हूँ। 7 ईयर्स पहले मैंने 16 बार खेला है, मैंने 16 बार खेला ना इसको। मैंने भी बहुत पहले खेला था, जब मैं 8-9th क्लास में हुआ करता था, तब मैंने प्लेस्टेशन 2 पे जो होते हैं ना सेंटर हुआ करते थे प्लेस्टेशन 2 के, वहाँ पे जाके वहाँ पे खेला था पूरा का पूरा गेम। 2 या 3 बार वहाँ पे एंड किया हुआ है। उसके बाद मेरे कंप्यूटर में मैंने खेला था काफ़ी बार, फिर उसका HD वर्जन आ गया तो वो भी खेला। मैं भी लगभग उसका पूरा का पूरा एंड कर चुका हूँ, 7-8 बार तो कर चुका हूँ रेजिडेंट इविल का। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा गेम मैंने वही खेला है, रेजिडेंट इविल 4। बट अब बहुत ज़्यादा उसके ग्राफिक्स वो हो गए पुराने। पहले मेरा फेवरेट गेम हुआ करता था। आशीष वेलकम, कैसे हो? नींद नहीं आ रही क्या? मैं रात को वैसे मेरे डेली लाइव 4 बजे सोता हूँ, 4-3-4 ऐसे डेली का है। चलो कमीशंस कर लेते हैं, उसके बाद कल करेंगे स्ट्रीम। मेरे अकाउंट में कमीशंस तो कल ही करेंगे, इसके कर लेते हैं अभी।
सीरियसली प्लंज डैमेज में मरे नहीं है। मैंने भी प्ले स्टेशन पर ही खेला था शॉप्स में। एक सेकंड, अरे सीरियसली हल्की सी हेल्प के लिए अल्टीमेट कर दिया। स्टेशन पर खेला था शॉप्स में, तब पीसी नहीं था मेरे पास और पीसी पर डिफ़िकल्ट है। सेम मेरे पास भी सेम केस था, एग्जैक्टली सेम था ब्रो। ओ बच गया, बिजली गिरती है अभी। ये गेम भी खेलते हो गए आप ओमेगा सिम गेमिंग? जेंशिन इम्पैक्ट। ब्रो ये क्या सीन था? एक सेकंड, थोड़ा सा सेंटर में लाओ इसको, दोनों के पिलर के हाथ में। चीज़ें ज़्यादा मस्त लग रही है। मुझे जोयस्टिक पर पसंद है ना, नहीं पसंद। मैं भूषित भाई का सब्सक्राइबर। अच्छा Faster? Okay, faster. तो वो भी तो वही गेम खेलते ज़्यादातर। लाइटनिंग करेक्टर पर गिरने पर अचीवमेंट मिलता है। मेरे को दोनों अकाउंट में मिल चुका है ऑलरेडी। क्लिफ हैंगर। ब्रो है किधर ये? टॉक टू लोइसू। एक्सबॉक्स आया उसके बाद मैंने गेम खेलना छोड़ दिया था। ओके, घर में फाइनेंशियल कंडीशन के कारण। ओके, एक्सबॉक्स में काफ़ी खर्चा होता है ना। मैं सोच रहा था एक्सबॉक्स गेम पास खरीदने की। 50 रुपीज़ मंथ का स्टार्टिंग ट्रायल। पीसी के अंदर भी सारे गेम सपोर्ट करेंगे। लाइब्रेरी थोड़ी अलग है बट काफ़ी सारे गेम्स आ जाएंगे। अब सब नॉर्मल है। नाइस ब्रो। फाइनेंशियल प्रॉब्लम हर कम फैमिली को फेस करनी पड़ती है किसी ना किसी टाइम पे। अब सब नॉर्मल है तो अच्छी बात है ब्रो। काफ़ी फैमिलीज़ को फेस करनी पड़ती है, सबको नहीं। बाकी सबका साथ साथ होता है तो बहुत बढ़िया रहता है, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम से निकलने में हेल्प रहती है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि एक्सबॉक्स पास खरीदने की सोच रहा हूँ। 50 रुपीज़ का फर्स्ट मंथ ट्रायल है, उसके बाद शायद 500 रुपीज़ पर मंथ है। ट्रायल करके देख लेते हैं, अगर लगेगा वर्थ। कुछ एक गेम्स के लिए कर सकता हूँ मैं, खासकर मीडियम आने वाला है उसके लिए हो जाएगा। उसके अंदर मुझे फ्री मिल जाएगी, मतलब 50 रुपीज़ लगेंगे, गेम हो जाएगी। प्लस मेरे को फोर्जा होराइजन 4 खेलनी थी, खासकर इस तरह के पीसी पे। तो खासकर 50 रुपीज़ पर आवर लेते थे शॉप वाले एक्सेस में। ट्रायल है ब्रो। बाकी 500 रुपीज़ पर मंथ बहुत बढ़िया हुआ करता था। गुड नाइट तुषार।
मैं भी बस ज़्यादा देर तक स्ट्रीम नहीं करने वाला, बस ये कमीशंस कंप्लीट कर रहा हूँ। और सेकंड अकाउंट में चलो वो तो मैं ऑफ स्ट्रीम करूँगा, सेकंड अकाउंट में लॉगिन करके कंडेंसर रेजिन बनानी है, दैट्स इट। Ask the audience about the story Louis was telling. Which story? Which audience? ब्रो पहले मैं ये कमीशन करूँगा आगे। ₹10 पर आवर। हाँ मैं भी जब खेलता था प्ले रेजिडेंट एविल 4 तब भी मेरा यही चार्जेस दिया करता था। Faster? ₹10 Okay, पर आवर। faster. ओ भाई ये नाले का पानी था। Faster? Okay, faster. फास्टर ओके फास्टर। मिस्टर के कैसे हो ब्रो, वेलकम। Faster? Okay, faster. Once upon a time. Wait. Like... टन टनन टनन। ये भी कमीशन में टाइम लगा दिया इन्होंने, अजीब से कमीशन से। कई बार तो काफ़ी फास्ट हो जाते हैं। एटलीस्ट अचीवमेंट मिली एक्स्ट्रा प्रीमो, राइट। ब्रो with the what? मैंने भी जेंशन इम्पैक्ट खेलना शुरू कर दिया, कुछ टिप्स दो ब्रो। कितने एडवेंचर रैंक पे आए हो और क्या टिप्स चाहिए, किस टाइप से रिलेटेड? आप मेरी बिगिनर वीडियो देख सकते हो बाय द वे, बट थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है।
बट आप मेरी बिगनर वीडियोस देख सकते हो और आज की वीडियो भी काफ़ी काम आएगी, बट उसके लिए थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए गेम के बारे में। थर्टी एट पे आ चुके हो, मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज हो चुका है आपको गेम का। कितने 5 स्टार करेक्टर है? Faster, faster. Okay, faster. Faster. एक ही है भाई। चीची चीची ही है क्या? हीलर है वो तो। मेरी बिगनर वीडियोस देखो, आपको काफ़ी टिप मिल जाएगी। बाकी आपको किसी चीज़ से पर्टिकुलर पूछना हो तो मैं डेली 2 से 8 लाइव स्ट्रीम करता हूँ, आप मेरे को कभी भी पूछ सकते हो। प्लस डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड का लिंक है, वो ज्वाइन कर सकते हो। और मेरी आज की वीडियो जरूर देखना। आज की मतलब 11 बजे करी थी, लिटरली 14 घंटे पहले जो वीडियो डाली थी, वो काफ़ी अच्छी रहेगी आपके लिए। विशेज़ वेस्ट ना हुए, मैक्सिमम नंबर ऑफ 5 स्टार मिलने के चांसेस हैं उससे। मैंने काफ़ी टिप्स दी है उसमें, 3 टिप्स दी है जो कि मेन टिप्स हैं। 12 मिनट की वीडियो वो चेक कर सकते हो। और बिगिनर वीडियोस का पूरा प्लेलिस्ट है जो डिस्क्रिप्शन में है, पूरा का पूरा वो चेकआउट कर सकते हो। उसके अलावा आपको कोई पर्टिकुलर अभी पूछना है या कभी भी पूछना हो तो आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन लाइव स्ट्रीम पे भी और डिस्कॉर्ड पे भी। पोइट वर्सेस पेच है, नाइस। Burst forth. Animal test 63% clear. Absorption test. Down the scalp. Feel this ancient power. Animal hypostasis and Retribution. फेवरेट कैरेक्टर भी रेजर है, नाइस। थैंक यू गाइस सो मच फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर 72 लाइक्स। it's you. Over here. Over here. व्हाट? It's Sarah from the Good Hunter. Oh, finally, I caught ये you. क्या था? ओ, मेरा जीन का स्टोरी क्वेस्ट शुरू हो गया है। है ना? एक सेकंड, मैं कोशिश करूं रिस्टार्ट करने की। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं डेली जेंशन की स्ट्रीम करता हूं 2 से 8। कल की स्ट्रीम होगी 2 से 12 तक। फास्ट प्रिमोजेम्स कैसे कलेक्ट करें? टेम्पल्स, स्पायरल अबिस, टेम्पल सारे क्लियर कर लेना, एक बार ही कर सकते हो। और एक्सप्लोरेशन।
और स्टोरी क्वेस्ट और मेन क्वेस्ट और जितने भी क्वेस्ट सारे साइड क्वेस्ट वगैरह वर्ल्ड क्वेस्ट वगैरह जितने हिडन वर्ल्ड क्वेस्ट है सब कुछ एक्सप्लोरेशन करते रहो। यही तरीके हैं, बट एक बार ख़त्म हो गए तो एक बार ख़त्म हो गए। स्पायरल भी थी है जो कि आपको रिपीट हाई लेवल्स में हाई लेवल में आपको अच्छे प्रीमोजेम्स दे सकते हैं। प्लीज़ मुझे अभी नहीं करना यार स्टोरी क्वेस्ट। भागो। Oh, it's you! Over here! हाँ रुक Over जा। here! It's Sarah from the Good Hunter. उसके पास जाता तो शुरू हो जाता। जीन का स्टोरी क्वेस्ट है ये, दूर रहो सारा से। Add Astra. ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। गेम को बंद नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे दूसरे अकाउंट में लॉगिन करके वो करना है। थोड़ी देर से गाना सुन लीजिए। कौन कौन देख रहा है अभी? मिस्टर के, टीना, तुषार नहीं, तुषार तो गया। ओमेगा सेम गेमिंग, डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड का लिंक है, ज्वाइन कर सकते हो गाइस। बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। उसके अलावा कल की स्ट्रीम, हाँ कल की स्ट्रीम 2 से 12 करेंगे। कल लाइव स्ट्रीम है 1.3 की अपडेट की, उसमें क्या क्या अपडेट आने वाले हैं उसके बारे में लाइव रिएक्शन करेंगे। 5:30 बजे मेरे ख्याल से, चेक कर लूँगा मैं टाइमिंग फिर से, बट 5:30 बजे मेरे ख्याल से है चाइना वाले की, और 9:30 बजे इंग्लिश वाले की। दोनों का टाइम चेक कर लूँगा मैं। सरवर खान, मिस्टर कैफ, टीना, गुड नाइट गाइस। मिलते हैं फिर कल 2 या 2:30 बजे के अराउंड। लॉन्ग स्ट्रीम होगी, पहली बार इतनी लंबी स्ट्रीम करने वाली है। क्या बात है 12 घंटे की करूं मैं, 12 घंटे का रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ। 2 से 2 करूं, 2 बजे हैं आज की, कल भी 2 बजे तक करूं, कर सकता हूं मैं, क्योंकि 2 लाइव स्ट्रीम भी मैं वो करूँगा रिएक्ट, कंटेंट तो होगा 2 बजे तक का। सी या बाय, बंद कर रहा हूँ मैं स्ट्रीम। सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ एंड शेयर कीजिए, 1000 सब्सक्राइबर्स पहुंचाइए मुझे। सी या।